Okay, so let's start. Okay, so today we are going to start with LMR series of engineering mechanics, machine design and strength of materials. ठीक है, तो पहले हम लोग किस तरह से इसका एजेंडा रहेगा, कुछ सम सॉल्व करेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, मशीन डिजाइन और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, but we will also in that sums learn some of the concepts. Okay, so if you have any queries, कुछ नहीं समझा हो तो आप chat box में you can just put your comment or you can put your question, and if you get an answer to a particular solution, then also you can put it there. Okay, so I'll be just moving the chat section, and if in case of queries, I'll refer that to solve your queries. Okay, so I hope you have got this question sheet, and as I have been told, the link for this question sheet is in your description, the video's description. Okay, so if you haven't downloaded it, you can just click it and download it. Okay, then without wasting any more time, so I'll just quickly get started. So in engineering mechanics, we have two sections basically. We have statics and dynamics. So in statics part, we deal with what? We deal with equilibrium equations. And equilibrium equations मतलब क्या होते हैं? Summation of fx, summation of fy, fz equal to 0, and moment equilibrium equation. Moment of summation of moment around x, y, and z equal to 0. Okay, ये equilibrium conditions है हमारे. All right. So statics में हम लोग क्या deal करते हैं? The entire system is in equilibrium. That is statically equilibrium. Okay. अभी equilibrium भी दो प्रकार के हैं. We have static equilibrium and we have dynamic equilibrium. All right. When I talk about static equilibrium, I say that the entire body or the entire system is stationary. Okay, Shaheen, the questions are in the description of this video. There is a link, I have been told there is a link given. You can click there and download it. Okay, so we have, I was talking about equilibrium. We are talking about in statics, we are talking about static equilibrium. All right, so entire system is stationary. All right, that's equilibrium part. Then in static equilibrium, what are the different concepts that we have in GATE? Okay, then we have Lami's theorem. All right, so Lami's theorem क्या बोलता है? So let's see if you have a point, and on this point you have three forces acting. So let's say this is F1, this is F2, and this is F3. Okay, so the angle, excuse me, the angle between the forces are writing as θ1, θ2, and θ3. All right. So what does Lami's theorem say? There are three conditions to use it. First of all, you should have three forces. These three forces should intersect at a particular point, and the entire system should be in equilibrium. All right. Only under this circumstances you can use Lami's theorem. All right. So Lami's theorem says we have F1. Whatever is the force, ये force के opposite वाला जो angle रहता है ना, वो नीचे आ जाता है. So we have F1 upon sine of θ1. Okay. Then take another force. Let's say F2. F2 को छोड़ के बाकी के दो forces है, उनके बीच वाला जो angle है, वो लेना रहता है. F2 upon sine of θ2. Similarly, F3 इसको छोड़ के बाकी के दो forces है, उनके बीच वाला जो angle है θ3, वो लेना रहेगा. ये आपका Lami's theorem है. Okay, but see, I think this problem will get resolved about the link. Don't link in the description. By the time I'm just dealing with some concepts here. Okay, so you don't need to refer any questions for that now. All right, so you see this is the equation for Lami's theorem. Just a quick recap of what we are doing quickly. Okay, so ये जो equation है ना, in some you might have guessed it, this is nothing but your sine law, triangle sine law. All right, so that is Lami's theorem. याद क्या रखना है आपको, कब यूज करना है? जब पॉइंट पे तीनों फोर्सेस इंटरसेक्ट होंगे तभी करना है. कॉन्करेंट सिस्टम है तभी कर सकते हैं, स्टैटिक है तभी कर सकते हैं,
और एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट होना है तीन फोर्सेस को, तभी हम लैमिस थ्योरम को यूज कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज है, ये बहुत जगह पर आपको काम आ सकती है। इफ यू स्पॉट दी क्वेश्चन करेक्टली, वे टू यूज इट। ओके, ये हो गया लैमिस थ्योरम। ऑलराइट, देन उसके बाद ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हम लोग चंद वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट करने की कोशिश करेंगे और कुछ नहीं। सो लैमिस थ्योरम हो गया, उसके बाद हम लोग फ्रिक्शन के बारे में पढ़े थे। फ्रिक्शन क्या है? एनीथिंग व्हिच इज रेजिस्टिंग योर रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू बॉडीज इज नथिंग बट अ फ्रिक्शन फोर्स। सो फ्रिक्शन कब आती है? जब दो बॉडीज के बीच में रिलेटिव मोशन होती है तब। If the two bodies don't have relative motion between them, there is no friction. So friction force को अगर आपको not equal to 0 बोलना है, तो they should have relative motion between them. Then only we can have friction force. Otherwise, there is no friction force. Friction force दो प्रकार है. We have static friction force written as mu s into normal reaction. This is the normal reaction that you obtain from the surface. Okay, so mu s is coefficient of static friction. इसको हम लोग FFS लिखेंगे ताकि static friction force बोलेंगे इसको. Mu s is static coefficient of friction and is the normal reaction. Okay, then F K बोलते हैं. So this is kinetic friction force. And when we talk about kinetic friction force, mu s is replaced by mu k and n remains unchanged, that is normal reaction. So here mu k मतलब क्या है? Dynamic coefficient of friction. Okay, this comes into picture when the entire system is in motion and when this is tending to move. Okay, this is tending to move. तभी आपका kinetic friction force आता है. And which among the two values will be larger? We have already learned that your mu s is always greater than mu k. So in other words, your FFS will always be greater than FFK. Okay, your static coefficient of friction force will always be more than the kinetic friction force. And if you want the body to be set in motion, you should overcome this static friction force. Alright. ये हम लोगों ने पढ़ा था। फ्रिक्शन में और क्या पढ़ा था? हम लोगों ने ये भी देखा था कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। ऑलराइट, angle of friction. What is angle of friction? It is nothing but the angle between the resultant and the normal reaction. Okay, so which resultant I'm talking about? I'm talking about the resultant of normal reaction and the friction force. So whatever is the resultant of the friction force and the normal reaction, okay, वो resultant का और normal reaction के बीच का जो angle है ना, उसको हम लोग बोलते हैं angle of friction. Okay. So angle of friction को हम denote करते हैं phi से, and it is actually given as tan inverse of mu s. Tan inverse of mu s. Okay. So the questions will be shared very soon. They've already commented in the comment section. So till then we will just recap some concepts. So phi is equal to tan inverse of mu s. ये आपका angle of friction हुआ. Alright. Now this angle of friction, this equation is also equal to, guess if you guys have guessed it, it is angle of repose. Okay, so same formula, angle of friction का tan inverse of mu s is nothing but your angle of repose. पर angle of repose होता क्या है? Angle of repose is that minimum angle at which if you keep the body, it will slide on account of its own weight. So उसको कुछ external force की जरूरत नहीं पड़ती, खुद ही का weight जो होता है ना, और उसको नीचे पुश कर देता है. So that minimum angle at which it just tends to move is nothing but your angle of repose. And mathematically, angle of repose and angle of friction have the same equation of tan inverse of mu s. Okay, ये हम लोगों ने learn किया friction में. So friction, ये friction करने के बाद, friction हो जाने के बाद, हम लोग किधर move हुए? Truss पे move हुए थे. So what is truss actually? Truss is nothing but a structural member which has degree of freedom equal to 0 and its only responsibility is to take forces. Structure है वो, truss is nothing but a structure. उसका एक ही काम रहता है, forces को sustain करो, forces को absorb करो.
ऑलराइट, उसमें हम लोगों ने दो मेथड्स सीखे थे, मेथड ऑफ जॉइंट्स एंड मेथड ऑफ सेक्शंस। मेथड ऑफ जॉइंट्स हम लोग एक एक जॉइंट को रिजॉल्व करते थे एंड वी यूज्ड टू यूज टू इक्वेशंस। तो एक जॉइंट लिया, लेट्स से दिस इज अ ट्रस, हम लोग ट्रस को ए बी सी डी करके डालेंगे एंड व्हाट वी विल डू इन मेथड ऑफ जॉइंट्स, वी विल टेक ईच एंड एवरी जॉइंट, लेट्स से ए, ओके, कैसे लेंगे ए जॉइंट को हम लोग, कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा जॉइंट लेना है? पहला ऐसा जॉइंट जिसके ऊपर दो से ज्यादा अननोन फोर्सेस नहीं होते, वही हम लोग जॉइंट एनालिसिस के लिए लेंगे। तो ये स्टेप करने से भी पहले आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप करनी होती है, आपको रिएक्शंस निकालने होते हैं। तो बिफोर इवन स्टार्टिंग योर एनालिसिस, स्टार्ट विथ योर finding out the support reactions. Find out the support reactions for this truss. Then check whether m is equal to 2j minus r is satisfied or not. So what is this equation? M is equal to 2j minus r. So m is number of members in the truss, j is number of joints, and r is the number of reactions for the entire truss. If this equation is satisfied, we say it is a perfect truss. And if it is a perfect truss, then only you can solve the truss, or you can say you can evaluate the forces on each and every member of the truss by using method of joints or method of sections. तो रिएक्शन निकालो, चेक करो, उसके बाद एक ऐसा जॉइंट ले लो पहले जिसके ऊपर दो से ज्यादा अननोन फोर्सेस होती ही नहीं, ओके, वो जॉइंट ले लो, उसको सॉल्व करो, फिर वो अनसॉल्व्ड, फिर वो जो फोर्सेस मिलेंगे उसका हेल्प लेके फिर दूसरा वाला कोई जॉइंट पकड़ो जिसको आपको इवैल्यूएट करना है, जिस मेंबर के ऊपर आपको फोर्सेस निकालना है। इस तरह से हम लोगों ने वो स्टेप बाय स्टेप देखे थे, ओके। मेथड ऑफ जॉइंट्स थोड़ा लेंथी है, पर इन केस ऑफ गेट बड़े लेंथी ट्रसेस नहीं आएंगे, ऑलराइट। देन वी लर्न अबाउट मेथड ऑफ सेक्शंस। तो मेथड ऑफ सेक्शंस के लिए क्या करना पड़ता है? अगेन ये स्टेप तो सही नहीं रहते, आपको रिएक्शन तो निकालना ही पड़ता है। उसके बाद ये वाली स्टेप आती है, आपको चेक करना है कि आपका परफेक्ट ट्रस है कि नहीं, क्योंकि उसके अलावा आप यूज नहीं कर सकते। देन आप क्या करोगे, पकड़ो आपके पास एक ट्रस है, लेट्स सी, इस तरह से एक ट्रस है एंड ये ट्रस के ऊपर कुछ ऐसे भी मेंबर्स हैं, चलो only then we can say it's a perfect truss. And let's say if you want to find out, what are the forces in BC, BD, and let's say ED, इन तीनों के ऊपर आपको निकालना है कि क्या क्या फोर्सेस है ये मेंबर्स के ऊपर। तो आपको पहला स्टेप ऑब्वियसली रिएक्शन और m is equal to 2j minus r करना है। उसके बाद आपको पूरे ट्रस को दो हिस्सों में बांटना है। You have to divide this entire truss into two halves such that when you cut into two parts, इसको मैंने कट किया, ओके, ये वाला पार्ट 1 पकड़ो, चेंज करना, ये वाला पार्ट 1 पकड़ो, ये वाला पार्ट 2 पकड़ो, कोई भी पार्ट ले सकते हो एनालिसिस के लिए। पर आप देखोगे मैंने कट किस तरह से किया सेक्शन को, ये सेक्शन को इस तरह से कट किया ताकि ये BC, BD एंड ED जो हम लोग को इवैल्यूएट करने हैं वो कट हो। तो सेक्शन इस तरह से कट करो जिस तरह से आपको ये तीन अननोन्स कट हो जाए। ये तीन अननोन मेंबर्स को ये सेक्शन कट रहा है, उसी तरह से आपको सेक्शन को दो हिस्सों में बांटना है, ओके। So good. So the questions are uploaded, the link is all given in the comment section, so you guys can download now, right? Okay. तो फिर again, the moment you cut this, you get three unknown members: BC, BD, and ED. In case of method of section, you can have maximum 3 unknowns. 3 से ज्यादा unknown हम लोग evaluate नहीं कर सकते by using method of section. Method of joints के लिए वो limitation 2 unknown के लिए था, क्योंकि हम लोग के पास सिर्फ 2 ही conditions of equilibrium थे, and they were summation of fx and summation of fy. Both of them
0. ये दो ही equations थे हमारे पास. But in case of sections, you can have maximum 3 unknowns because there are 3 equations. Summation of fx equal to 0, summation of fy equal to 0, and summation of fz equal to 0. ये हमारे पास 3 equations थे. Sorry, fz नहीं है. It is moment about z. ये 3 equations, 3 unknowns हम लोग evaluate कर सकते हैं by using method of sections. Okay. So, again, I'm reminding, if anything you want to just ask me, you can just drop in the comment section, and I'll try to, every 2-3 minutes look at the comments, and if there are any questions, I'll try to answer. Okay. So, yeah, let's proceed ahead. Trusses में ही हम लोगों ने एक दो special cases किए थे, and those were important. And one of the most important case was zero member trust. So zero member trust क्या होता है? उसके limitations and exactly वो theorem क्या होता है? Let's see that. So you should have 3 members. AB एक है, BC दूसरा है, okay? And there is another member, let's say BD. अगर आपके पास 3 members है trust में, and they're intersecting at a joint at a particular point, and if this joint is unloaded, okay, एक तो 3 members होने चाहिए, और जिधर ही intersect होते हैं तीनों members वो unloaded होना चाहिए. Unloaded मतलब वो joint के ऊपर कोई भी external force नहीं होना चाहिए. Again I repeat, ये joint के ऊपर कोई external force नहीं होना चाहिए. Okay, and out of these 3, 2 should be collinear. Collinear मतलब in a straight line. So AB and BC are collinear. Then in that case, the third member, that is BD, is a zero force member. In that case, BD is a zero force member. Okay, so ये था zero force member principle. 3 members, out of which 2 of them are collinear, and wherever these 3 intersect at a particular joint, that is B, okay, this joint is unloaded, and in that case, if all these 3 conditions are satisfied, then your BD becomes the zero force member. Okay, so this is one of the most important special cases of trust. There is another case where you have 4 members. So you have 4 members. And these 4 members form 2 pairs of collinear members. So AE and EC are collinear; they are forming 1 pair of collinear members. DE and EB, they are forming another pair of collinear members. So we have 2 pair of collinear members such that all of them intersect at a particular joint, that is E. Okay, and ये E भी ना unloaded है, उसके ऊपर कोई external force नहीं आता. In that case, these members which are collinear will have equal magnitude of forces in them. Okay, तो इनके ऊपर force magnitude wise सभी members के ऊपर same रहेगी. Okay, not many questions are asked. In fact, I have not seen a single question in the past 10 years asked for for this kind of case. Very rarely do they ask. But the most important case is this. Okay, I hope ये process के बारे में था. Right. Then, as we finish this section in a regular course, we learned about friction, trusses, equilibrium, condition. Then we move to dynamics part. Okay. So dynamics part में क्या किया है हम लोगों ने dynamics में study किया कि there are 2 sections into which dynamics is divided. One is kinematics, one is kinetics. Okay, kinematics में क्या होता है? हम लोग सिर्फ motion के बारे में study करते हैं. In other words, we don't study the cause of the motion. What is causing this motion to take place? We are not concerned with that. So we only deal with these equations. V is equal to U plus AT. V square is equal to U square plus 2AS. And S is equal to UT plus half AT square.
ओके, ये 4 इक्वेशंस, ये 3 इक्वेशंस हम लोगों ने लर्न की। इसमें आप देखो वी वोंट सी एनी पैरामीटर ऑफ फोर्स F, we won't see any parameter of mass at all. So when you don't see mass and forces, we say it's kinematic. So these are the kinematic equations. Okay, इनका एक important conditions ये था कि they should only be used whenever there is a constant acceleration present. मतलब changes in velocity are linear. But what if this is not the condition? In that case, what should we do is we have to use the basic equations of kinematics. मतलब velocity v is written as dx by dt. So we are going to use dx is equal to v dt. So we might need to integrate depending upon the conditions that are given in the questions. Similarly, when we talk about acceleration a, it is dv by dt. Okay, so x here is a displacement, dx by dt is nothing but my velocity. Here v is the velocity, dv by dt is nothing but my acceleration. So these are the equations that you might need to use when your acceleration is not a constant value. And the moment the acceleration is a constant value, you deal with this equation. Okay. So let's start with something. And here also we learned about Newton's laws of motion. न्यूटन का फर्स्ट लॉ हम लोगों ने स्टडी किया कि एवरी बॉडी विल कंटिन्यू टू रिमेन इन इट्स ओरिजिनल स्टेट वेदर इट इज रेस्ट और ऑफ कांस्टेंट वेलोसिटी अनलेस यू गिव एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स टू द सिस्टम. ओके, ये आपका न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ था. नेक्स्ट इज mostly the session won't be available afterwards because it's a live session, so it won't be recorded. Okay, then there was that. So we talked about acceleration. The ये वाले equations हम लोग use करेंगे. Alright. Now let's talk about some sums. And हम लोग न्यूटन के फर्स्ट लॉ के बारे में पता है. न्यूटन का सेकंड लॉ हम लोग को क्या करता है? हम लोग को क्वांटिफाई करता है फोर्स को. So what does it tell you is whatever is the force acting depends upon the rate of change of momentum, okay, which is nothing but acceleration. Okay, so that is Newton's second law. Newton's के second law को हम लोग थोड़ा modify करके डी एलेनबर्ट ने एक अलग तरीके के लॉ पेश किया, that we'll see. But let's talk about Newton's third law. Newton's third law क्या बोलते हैं? Every action has an equal and opposite reaction, and you have to keep this in mind. They act on two different bodies, so action reaction forces do not cancel each other. So उनका net force zero नहीं होता. All right. So that is another important point to remember. Now let's take a question and we'll try to learn something inside that question. So if you have this question set in front of you, page number 1. Okay. There is a second sum. Okay. उसका हम second sum देखेंगे. All right. So second sum क्या बोलता है? कि a pin jointed uniform rigid rod of weight W and length L is supported horizontally by an external force F as shown in the figure. So let's draw this diagram. And there is a force F external which is acting here. And this rod is of length. This rod is weight है W. जो सेंटर में एक्ट हो रहा है. I'll divide this into L by 2 into L by 2. Okay, and they're asking you if this force F is suddenly removed at the instant of force removal, what is the magnitude of vertical reaction developed at this support? तो उन्होंने पूछा है ये जो रिएक्शन इधर डेवलप होती है, the moment you remove this force, okay, what is that reaction? And they have given in front of you 4 options. So how to do this? पहली चीज, the moment to remove this force F, what is going to happen? Okay, this thing is going to rotate. This entire rod is going to rotate, and it is rotating about this point O. Let's name this as O. About this point O. So it is performing the rotary motion. So you need to find out the mass moment of inertia about this particular point M. Okay, हम लोग को पता है ये बार का about its center, about its CG will be ml square by 12. About O,
अबाउट O हम लोग को I का वैल्यू निकालना है. Okay, we'll see why. I का वैल्यू निकालना है अबाउट O. It will be IG plus what? M into H square. What is this? This is parallel axis theorem. Okay, so हम लोगों ने axis shift किया, तो about the shifted axis, what is the value of I? That is what we are finding out. Alright, so that is the first thing that you get from here. This is rotating about this particular point. We need to find out I. IG क्या है इसका? It is ml square by 12 plus m into h. What is h? H is the distance by which the axis is shifted. Okay, and that distance is L by 2. So L by 2 the whole square will be L square by 4. Okay, then if you solve this, you get 12 as the LCM. So this will be 3 plus 1, 4. So we get ml square by 3. तो ये है आपका I about 2. इसको निकालना था मुझे. Okay, I want they are asking you what is the vertical reaction. Alright, ये हम लोग को निकालना है. So yeah, उन्होंने weight दिया है W, that's fine. Now another important thing. It will rotate, right? It will rotate about this particular point. What is the where is the torque coming? Okay, torque is given by this. ये force उसको खींचेगा rotate करने के लिए. So what is the equation of torque? W into distance L by 2. Okay, ये है. This I can write this as I into alpha, where alpha is the angular acceleration. Alpha is the angular acceleration of the system. तो ये rotate हो रहा है. We talk about angular velocities, angular acceleration. And since it is having some torque, it is going to have some angular acceleration. इसका हम लोग बाद में किस तरह से use करेंगे, we'll see that. But let's substitute. I का value मुझे पता है about the shifted axis is ml square by 3. I can write this as W by G L square by 3. Why? Because the value of W is given. Mass नहीं हो रहा है. Okay, हम लोग W के terms में लिखते हैं, weight के terms में लिखते हैं इसको. If I substitute here, what I get is W into L by 2. W into L by 2. I को substitute करता हूँ. W upon G L square by 3 into alpha. Okay, so ये W cancel हो जाएगा. I think this one gets cancelled, and what remains here is 3G upon 2L equal to alpha. ये आपको alpha का वैल्यू मिल जाएगा जैसे. Yeah. ये क्यों हम लोगों ने किया? Why we did this is to evaluate inertia force. क्या होता है? The moment you release this, there will be inertia force acting on the system. Okay, and that inertia force, so आपके पास reaction है, ये weight नीचे की तरफ act हो रहा है. What will be the inertia force? It will be acting in the upward direction. So inertia force को मैं पकड़ो n लिखता हूँ. ये आपका inertia force है. ये opposite direction में act होगा. Okay. So what will be my so let's proceed ahead. So alpha का value मुझे मिला. Okay. Okay, fine. So nothing related to. Let me just check the comment section. Yeah, nothing related to our topic. Okay, fine. So alpha का value मिला. मुझे अभी 80 निकालना है. Tangential acceleration. Okay, tangential acceleration निकालना है. वो क्या रहेगा value? 80 is given as r into alpha. Okay, this 80 I can write. This alpha I can write in terms of this. So alpha will be equal to 80 by r. 80 by r. Okay, r is nothing but the radius of motion. ये r को मैं L by 2 substitute करूँगा. So I can write this alpha as this is equal to 3g upon 2l. Okay, and this r will write as l. ये r को मैं l लिखूँगा. इधर अपना l है. Okay, so what I get here is my 80 as 3g by 2. Let me check. We get 80 as 3g
Sorry, there is a mistake from my end. Let me check this. So I hope it is clear. Okay. Any questions regarding why I am doing this or ये IO कैसे आया, ये formula कैसे आया? I guess there are no questions, so we can proceed ahead. Yeah. So we got alpha is 3g upon 2r, which is correct. Then why we are doing all these things is we need to find out inertia force. And inertia force is mass into tangential acceleration. ये आपका inertia force है, हम लोग को evaluate करना है. Right? So W upon G into AT. इसका निकालना है. Excuse me. Yeah. I just give you a minute. If you guys are, writing or solving, I need to erase the row. So I'll just, write in this particular section. I'll wait for a moment for you guys to write. If there are any questions, I'll just take a moment. We'll just wait for a moment if anyone wants to ask me something. Okay, I guess there is no questions. So we already know AT is given as R into alpha. Alpha का value मुझे पता है. I'll just substitute it here. So I get R as L by 2, alpha as 3G upon 2L. This L gets cancelled. What I get is as 3G upon 4. That is my AT. Okay, and you can substitute this here in this equation. Okay, so AT का value मिला 3G upon 4. So I can write this as 3G upon 4. अब देखो तो ये G और G cancel हो जाता है. What remains your inertia force as 3 by 4 into W. ये आपका inertia force आ जाता है. Because, okay, Shubham, you want to repeat the calculations? Okay, fine, let's repeat the calculations. So first we did about IO. We found out moment of inertia about the shifted axis O by using parallel axis theorem. ये बार के लिए about CG, I hope you guys know it is ml square by 12. So plus mass into the distance between the CG and the shifted axis. In this case, it is L by 2. So L by 2 substitute किया इसके अंदर, and what we get L by 2 the whole square is L square by 4. ये evaluate करके हम लोगों ने ml square by 3 निकाला, but ये m को मैंने W by G के terms में लिखा है इधर, weight by gravity. Alright, ये first part हो गया. ये हम लोगों ने क्यों किया? क्योंकि ना मुझे टॉर्क को इक्वेट करना है. टॉर्क इज नथिंग बट दिस वेट W into the distance L by 2. Okay, so W into L by 2. W into L by 2. It is also given in terms of I as I into alpha. Okay, I का वैल्यू हम लोग इधर से निकाला अभी. Alpha is nothing but my angular acceleration. So when I equate these values, okay, I get alpha as 3G upon 2L. ये मुझे क्यों निकालना पड़ा? Because I wanted to find out the value of tangential acceleration. Why I needed tangential acceleration? Because I want to find out the value of inertia force. And why inertia force will be acting? Because the moment you remove this force F, this body will not be in equilibrium now. Okay, it will be having some net motion in the downward direction the moment you remove this. So for that instance, you are going to have some inertia force. It's not going to be in equilibrium. You have to bring it into dynamic equilibrium. यही d एलिमेंट है. Okay, so we'll come to that. So I will be equal to m into AT. m को मैं W by G लिखा. AT का वैल्यू AT written as R into alpha. AT is tangential acceleration. Linear tangential और ऊपर से linear acceleration straight away. Linear acceleration is R into alpha. ये R का वैल्यू L by 2 है अपने केस में. Alpha written is 3G upon 2L. इसको substitute करो, AT का वैल्यू मिलेगा. Moment you get this AT का value, substitute it here for I, you get 3W by 4. Okay. Variable theorem equilibrium conditions के बारे में deal करते हैं. Okay, it's not when you have non-equilibrium conditions. That's what I said. The moment you remove this F ना, ये system equilibrium में नहीं रहेगा. Okay, it will have some net motion. It will have some net force acting downwards, which is going to bring this entire thing into rotation. इसलिए आप वेरिएबल्स थ्योरम नहीं यूज कर सकते.
वेरिएबल्स थ्योरम यूज करने का सबसे बड़ा assumption क्या होता है कि आपका पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, जो इन दिस केस नहीं है। ओके, इन दिस केस नहीं है, इसलिए आप वेरिएबल्स थ्योरम नहीं यूज कर सकते, राइट। सो आपको i का वैल्यू आया। नाउ इफ यू सी what will be the reaction, what will be the reaction, it will be w minus whatever is the inertia force. Okay, w minus whatever is the inertia force. So my reaction here will be w minus एक नीचे की तरफ है minus n will be my reaction. Okay, so this w minus 3w by 4 will be your reaction force. ये equation क्या है पता है? This is your D'Alembert's principle. Okay, तो D'Alembert principle होता क्या है? हम लोग देख लेते हैं क्या वो statement बोलता है. Okay, well I'll just solve it. The entire calculation let it be. So क्या बोलता है D'Alembert का calculation? कि let's say if you have an object which is already in motion, okay, and it is constantly accelerating. Let's take a simple case. Okay, it is constantly accelerating. So if it is constantly accelerating at a constant acceleration, then in that case the system is not in equilibrium. System is not in equilibrium. When I say not in equilibrium, the summation of forces will not be equal to 0. Equilibrium में नहीं है. So there is some net acceleration, there is some net force acting. अगर इस सिस्टम को डायनामिक इक्विलिब्रियम में लाना है, mark my words, अगर ये सिस्टम को डायनामिक इक्विलिब्रियम में लाना है, तो आपके पास एक अपोजिंग फोर्स होना चाहिए इस तरह से। ओके, ये आपका अपोजिंग फोर्स को बोलता है D'Alembert, ये इनर्शिया फोर्स है। ओके, Fi, ये अपोजिंग फोर्स होना चाहिए जो आइडियली इट विल बी इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। ओके, सो ये इनर्शिया फोर्स पूरे सिस्टम को डायनामिक इक्विलिब्रियम में लाता है। मतलब अगर ये फोर्स अगर आपने एक्सटर्नली एक्ट करवाया ना ये सिस्टम के ऊपर, तो इस सिस्टम के पास एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव हो जाएगा, एंड इन दैट केस वी सी द सिस्टम हैज कम इनटू डायनामिक इक्विलिब्रियम। ओके, दैट इज व्हाट योर इनर्शिया फोर्स हियर इज n in your case in this sum. This is your inertia force n. So w is acting downwards. ओके, वो फोर्स आपको नीचे मोशन देने की कोशिश करता है, उसके अपोजिट आपका इनर्शिया फोर्स आता है। ओके, एंड द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू व्हाटएवर फोर्स रिमेन्स विल बी योर रिएक्शन। ओके, व्हाट विल बी नथिंग बट योर रिएक्शन। ओके, सो इफ यू सॉल्व दिस, व्हाट रिमेन्स इज r is equal to, I guess, yeah, it is done by 4, and I guess that is in option B. Yeah, option B. That is option B. Okay. So इस सम में हम लोगों ने क्या देखा है? पहली चीज देखा कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है। उसके बाद ये वाला कन्वर्शन देखा। Okay, linear acceleration is r into alpha in terms of angular acceleration. बाद में हम लोगों ने ये वाला इक्वेशन देखा, टॉर्क के बारे में इक्वेशन, फोर्स इनटू रेडियस और I into अल्फा। तो हम लोगों ने ये इक्वेशन स्टडी किया, ये कॉन्सेप्ट स्टडी किया, ये वाला इक्वेशन स्टडी किया, D'Alembert प्रिंसिपल के बारे में देखा हम लोगों ने, और बाद में रिएक्शन निकाला। The moment it comes in dynamic equilibrium, whenever you have a reaction force, then we can use equilibrium conditions. और उसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए हम लोग को क्या चाहिए? इनर्शिया फोर्स चाहिए। इसलिए ये सब कैलकुलेशन एंड वेरिएबल्स थ्योरम अगर आप यूज करें तो आंसर शायद आपको 0 आ जाता। ओके, एंड आई थिंक वो आंसर है आपके ऑप्शंस में भी, सो दैट इज वेरी hazardous. So the answer is W by 4. Okay. Then उसके बाद any questions here? I just before I erase this, is someone's writing, should I erase it or not? Just quickly reply. I'll just come on one second and have the board for you. Okay, so no one's writing. I can just erase this. We'll move on to the next question.
ओके उसके बाद हम लोग उसके 2013 वाला I mean in your question set let's look at I think another question is missing. Let's look at question in page number 2, question number 5. Page number 2, question number 5. Okay. So in this question, question number 5 में आपको आपने देखा है कि टैंक दिया है and there is some free jet coming out of the water, coming out, and it is open. So let's read the question. So a tank open at the top with a water level of 1 meter, as shown in the figure, has a hole at a height of 0.5 meters. A free jet lives horizontally from the smooth hole. The distance x where the jet strikes the floor is. So we might have done this question, but it's a recap hopefully. It's a recap question so that you learn the concept which I'm trying to teach you here. I just quick recap of that. All right. So आपके पास ऐसा है 1 मीटर है and this is open to atmosphere. इधर एक होल है जिधर से आपका पानी बाहर निकाल के नीचे गिर रहा है at the distance x. तो ये जो डिस्टेंस है ना x इसको आपको निकालना है बोला है और उन्होंने बोला कि ये हाइट 0.5 है. ओके तो हम लोग को ये वाला वैल्यू निकालना है. फाइन वैल्यू निकालते हैं हम लोग. तो व्हाट इज दिस एक्चुअली द मोमेंट. लेट्स टॉक अबाउट अ सिंगल वाटर ड्रॉपलेट. एक वाटर ड्रॉपलेट जब इधर से बाहर निकल के आ जाता है in that case what we will find out its velocity. तो इधर कितना रहेगा वो वाला velocity हम लोग देखते हैं. ठीक है ये वाला velocity हम लोग को देखना है. then okay so ये भी निकालते हैं. what kind of motion is this? This is a projectile motion. ये आपका projectile motion है और प्रोजेक्टाइल मोशन से हम लोग को इवैल्यूएट करने की डिस्टेंस क्या है. we know in projectile motion there are two types of motion. one is a horizontal motion and a vertical motion. So the entire projectile motion is comprised of two parts, horizontal and vertical. ये कौन सा मोशन हो रहा है आपका. ये कौन से डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग. हॉरिजॉन्टल. तो जब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे ना तो हम लोग हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लेंगे vx और टाइम पीरियड की. टाइम पीरियड कितना इधर से इधर आने के लिए पानी को या ये हाइट को पूरी तरह से ट्रैवल करने के लिए. तो टोटल हाइट को ट्रैवल करने का टाइम और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को ट्रैवल करने का टाइम ऑलमोस्ट सेम ही है. दे आर बेसिकली द सेम. Now if you look, this velocity v is horizontal. Okay, if this is horizontal, the angle of projection here is 0. So if you talk about theta, initially is 0, right? And you want to find out what is v. अब ये v को कैसे find out करेंगे? इस v को find out करने के लिए हम लोग fluid mechanics का help लेंगे. हम लोग बर्नौलीज थ्योरम यूज करेंगे इधर. तो बर्नौलीज थ्योरम यूज करने के लिए ये हम लोग 1 लेंगे. ये जस्ट बाहर आया वाटर ड्रॉपलेट टैंक के, इसको 2 लेंगे. ऑलराइट सो I'll use Bernoulli's equation. P1 upon rho g plus V1 square upon 2g plus Z1 will be equal to P2 upon rho g plus V2 square upon 2g plus Z2. Now, here you have atmospheric pressure at 1. Here, when the water droplet just comes out of this tank, again you have there's nothing but your atmospheric pressure. So the gauge pressure here in both these cases will be 0 or they are the same. Since they are atmospheric pressure, they will cancel out. All right. The velocity point 1, ये जो velocity है इसका v1 जो है ना ये बहुत ही negligible होता है. So we can say it is approximately equal to 0. तो इसको cancel out कर दिए. Okay. Z1 आपको पता है डेटम से 1 मीटर के ऊपर है. V2 मतलब जस्ट बाहर, मतलब इसका प्रोजेक्शन वेलोसिटी कुछ रहेगा v, वही हम लोग को कैलकुलेट करना है. सो ये V2 एक्चुअली आपका v है. ओके प्रोजेक्शन वेलोसिटी. सो योर V2 स्क्वायर अपॉन 2g और Z2 will be 0.5. So we get here V2
सो आप देखोगे 0.5 बचेगा, 0.5 into 2 will be 1 and this g उसका रूट निकालोगे तो you have root g meters per second is the answer for V2. ये V2 आपका V है, ओके ये V2 आपका V है, ये V का वैल्यू मिल गया, थीटा का वैल्यू मुझे 0 पता है, सो Vx will be nothing but my Vx will be V cos of theta, theta 0 मतलब cos 0 is 1, Vx will be nothing but my V which is nothing but root g. अब ये टाइम कैसे इवैल्यूएट करें? If you look now, जितना टाइम इधर पहुंचने के लिए लगता है उतने टाइम में ये वाटर ड्रॉपलेट वर्टिकल डिस्टेंस भी ट्रैवल करता है, ओके ऊपर से इधर से नीचे आ जाता है, तो वर्टिकल डिस्टेंस अगर ये ट्रैवल करता है तो s will be written as ut plus half at square. नाउ ये मैं काइनेमेटिक इक्वेशन यूज कर रहा हूं और ये वाला काइनेमेटिक इक्वेशन कब यूज कर रहा हूं, क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि इसके ऊपर जो फोर्स एक्सेलरेशन एक्ट हो रहा है ना, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है which is g and it is constant, hence I'm using this. ये डिस्टेंस कितना ट्रैवल करता है 0.5 मीटर्स. अब ये वर्टिकल डिस्टेंस के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम लोग वेलोसिटीज भी वर्टिकल लेंगे, कॉमन सेंस. तो ये जो u है ना, ये जो u है ये वर्टिकल वेलोसिटी है, और ये वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, इधर आप देखोगे इट विल बी written as, this will be written as vy, okay, and this will be written as v sin of theta. but theta क्या है, 0 है, theta 0 है, sin 0 है, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, बचेगा सिर्फ आपके पास half into g into t square. So if you do this, it will be 1 by g, and so t will be equal to 1 by root of g seconds. Okay, ये आपका टाइम पीरियड आ गया. Now we have the time period also and we have the x also. So my x will be equal to v, that is root g, into 1 by root g. इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको आ जाता है 1 meters. And that's the thing. Yeah, and that is nothing but the option B. तो इसमें ये सम क्यों दिया था, ताकि आपको एक क्विक रिकैप हो जाए प्रोजेक्टाइल का. ओके, प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में कब किस तरह से किस कैसे सॉल्व करना है आपको. ओके, then what next? Okay, hope anyone who okay. Question 3. Yeah, I'll come to that question later on. So yeah, it's in my kitty to solve. Okay, question 3 I'll solve later on. So I'm following a particular sequence of my own, so I'll solve it later on. I think there are no other doubts. Okay, so yeah, we can proceed ahead. I hope anyone solve with x component of velocity. So can we use third equation and solve with x component of velocity? Third equation. So v square equal to u square plus 2as. You're talking about. So v square equal to u square plus 2as. You cannot use this equation because horizontal motion के लिए acceleration 0 हो जाता है. Horizontal motion के लिए yes. Horizontal motion के लिए acceleration 0 हो जाता है. That's not an accelerated motion. You cannot use this equation for horizontal for x component here. No. Because only vertical motion is accelerated. और ये कब equations use करेंगे हम लोग? जब acceleration होगा तब. Okay. हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए कुछ भी एक्सेलरेशन नहीं होता है. हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए एक्सेलरेशन नहीं होता, वर्टिकल मोशन के लिए एक्सेलरेशन होता है. इसलिए हम लोगों ने वर्टिकल मोशन जब कंसीडर किया तो ये वाला इक्वेशन हम लोगों ने यूज किया सर. हॉरिजॉन्टल के लिए नहीं यूज किया. डायरेक्ट रेंज फॉर्मूला. No, you cannot use direct range formula. What is the condition if you want to use the direct range formula? Your projection point and the impact point after the projection. मतलब जिधर से आपने उसको फेंका और जिधर जाके वो गिरा, ये दोनों सेम लेवल पे होने चाहिए. इधर आपका सेम लेवल पे है क्या शुभम?
इसलिए हम लोग ये डायरेक्ट रेंज का फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते, क्योंकि आपका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ऊपर है, जिसका लेवल इम्पैक्ट से अलग है। तो हम लोग ये रेंज का फॉर्मूला डायरेक्ट इक्वेशन पे यूज करें। वो कब यूज कर सकते हैं? जब आप प्रोजेक्ट करोगे, इधर से प्रोजेक्ट किया, इधर आके गिरा, ये रहता है रेंज, ये आपका मैक्सिमम रेंज, ये नहीं मैक्सिमम रेंज। आई होप शुभम ये आपको समझ में आए। ये रेंज फॉर्मूला हम लोग इधर नहीं यूज कर सकते। Yes, any more questions? Like this, there are no more questions, then we can go ahead. Okay, there are no more questions, we can go ahead. उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, पेज नंबर 2 के ऊपर का जो है। ओके, सो दे आर सेइंग there are two disks A and B with identical masses M and radius R which are initially at rest. So there are two disks A and B which are initially at rest. They roll down from the top of an inclined planes. Okay, so there are two inclined planes here. Let's say there is another inclined plane here. And there are two disks A and B, and these inclinations are the same, so there is no change in the inclinations theta. And disk A has they roll from top to the top of the identical inclined mass planes without slipping. Disk A has all of its mass concentrated at the rim. तो ये जो पूरा मास है ना, उसके रिम के ऊपर है, इधर है। तो आप इसको ऐसा अज्यूम कर सकते हो, पुली जो रहता है ना, पुली विद स्पोक्स, तो पूरा जो हेवी मास रहता है वो रिम की तरफ रहता है। ओके, तो वैसा वाला केस है, उसका पूरा जो मास है ना वो रिम के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड है, पुली है पकड़ो। ओके, तो पूरा मास इधर ही कॉन्सेंट्रेटेड है, रिम के ऊपर। ओके, एंड while disk B has its mass uniformly distributed, ये disk B के ऊपर uniformly distributed है, मतलब ये एक टायर की तरह है जिसका mass uniformly distributed है सभी जगह। And when you have such kind of cases, they are saying at the bottom of the plane the ratio of the velocity of the center of the disk A to the velocity of the center of the disk B, ये आपको निकालना है। Okay, this is a good question. So कैसे करेंगे हम लोग इसको? So what we are going to first find out is what is the value of I for A and I for B. यही important है। इसके बाद एक नया तरीका है इसको सॉल्व करना, तरीका से there is some different method which I am going to use since I am solving this. तो A और B का I का values क्या है? First of all, okay, not this chart. We'll use this white one. So I at A will be, ये जब mass रिम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट होता है ना, तो उसके लिए I का वैल्यू रहता है mr square बस। ओके, I will be mr square. And when you have uniformly distributed weight or mass, in that case I of B will be mr square by 2. I hope you know these equations. Okay, so ये mr square by 2 रहेगा। Now, both of them are from the same height. They are released from the same height, and they have the same inclination as well. Because they have the same inclination, they are released from the same height. Initially, both of them were having zero velocity. So, what we are going to do is, ये वाला condition है. Potential energy at A will be same as potential energy at B. Okay, ये क्यों same आएगा? क्योंकि इनके मास सेम है। ओके, जी का वैल्यू तो सेम ही रहेगा दोनों के लिए,
और जो h रहता है mgh फॉर्मूला में h, ये हाइट किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, इंक्लाइंड प्लेन का थीटा के ऊपर, और थीटा दोनों केस के लिए सेम होगा, तो h का वैल्यू भी सेम ही होने वाला है, hence potential energies for both A and B are going to be the same. Okay, now I'm going to use this result. और जैसे ही नीचे आ जाएगा ना, और इधर तक आ गया, एंड तक आ गया, रूल होके एंड तक दोनों मासेस आ गए. Now that the entire potential energy got converted to kinetic energy, ये पूरी kinetic energy में कन्वर्ट हो गई, जैसे पूरी तरह से नीचे रोल हो गई. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इसकी ये कांसेप्ट आएगा. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है कि whatever is the energy before, same should be energy after, in simple words. So what is the energy before? Potential energy. That should be the same energy afterwards. So what I can write this as kinetic energy of A. अभी जब रोल होता है ना, नीचे की तरफ रोल होता है, तो ये रोलिंग मोशन को हम लोग दो काइनेटिक एनर्जीज में डिवाइड करेंगे. एक होता है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, जो स्ट्रेट लाइन में मोशन होता है जब होता है, और एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये रोटेट होके नीचे आ रहा है रोल होके. सो काइनेटिक एनर्जी मैं दो हिस्सों में बांटूंगा अभी. काइनेटिक एनर्जी विल बी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी rotational, that will be for A. In दोनों का sum will be the total kinetic energy for A, and this energy will be equal to the potential energy. Why? Because law of conservation of energy principle. Since both of them are same, I can write it this way. Okay, kinetic energy translational plus kinetic energy rotational for B as well. Both of them are actually ये पूरे दोनों जो चीज है ना, ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी ही है कंबाइंड. ओके, दिस इज द इक्वेशन दैट वी गेट. ये कैसे आया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ओके, सो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन कैसे रहेगा फिर? हाफ, ओके, मास फॉर ए, वेलोसिटी फॉर ए स्क्वायर. उन्होंने पूछा है रेशियो ऑफ द वेलोसिटीज ऑफ द सेंटर ऑफ द डिस्क ए टू द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ द डिस्क बी. तो बी ए बाय बी बी पूछा उन्होंने, लीनियर वेलोसिटीज के बारे में पूछा है, एंगुलर नहीं. ओके, प्लस हाफ. अभी काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल कैसा रहेगा? आई मास के जगह आई आ जाएगा, क्योंकि रोटेशन के बारे में बात कर रहे हैं. v के जगह ओमेगा ए स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि हम लोग एंगुलर वेलोसिटीज के बारे में बात कर रहे हैं. दैट विल बी इक्वल टू हाफ m b b b स्क्वायर प्लस हाफ i b ओमेगा b स्क्वायर. ओके, नाउ व्हाट वी विल डू इज, ये जो वैल्यूज हम लोगों ने निकाले हैं ना, लिखे, वो इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे. ये i में, ये आपका i a है, ये आपका i b है. ओके, सो व्हाट वी गेट इज हाफ m a b a स्क्वायर प्लस हाफ i a. r a will be m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हाफ, sorry, mb vb square plus half ib will be mr square by 2. So mr square by 2 into omega b square. Okay, now इसके बाद आप देखोगे तो ये देखो, ये क्या बन जाएगा? This will be va square. Velocity v क्या रहता है? r into omega. You know this equation. v will be equal to r into omega. ये r into omega भी जो दिखेगा, r square into omega square, तो क्या रहेगा? v square रहेगा, तो v a square आ गया. ओके, सिमिलरली आप इधर देखोगे ना, ये वाला, ये v b square आ गया आपका. ओके, तो आपको पूरा m a और m b के टर्म्स में दिखेगा, और आप देखोगे दोनों के मासेस सेम ही है, of identical masses. They have talked about identical m. Okay, तो ये m भी कैंसिल हो जाएगा, m m m and this m. Okay,
अगेन ये हाफ भी कैंसिल हो जाएगा, हाफ, ये हाफ, ये हाफ और ये हाफ, तो बचेगा क्या? तो व्हाट रिमेन्स नाउ इज VA स्क्वायर प्लस VA स्क्वायर equal to VB square plus VB square by 2. Yeah, I want to correct here. Yeah, VB square by 2. So VA square plus VA square will be 2 VA square. This will be 3 by 2 VB square. और हमने क्या है VA अपॉन VB का रेशियो, आपको जस्ट रीअरेंज करना है, तो ये 3 by 4 अंडर रूट मतलब रूट 3 by 2. Oh, okay, they are given in the form of root 3 by 4. Yeah, so root 3 by 4. So the option is A. This option is A. Okay. So ये सम क्यों लिया मैंने? क्योंकि इधर आपको दो चीजें बतानी थी मुझे. एक तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी था, जिसको यूज करके हम लोगों ने ये इक्वेशन को इस तरह से लिखा. फिर मुझे ये बताना था कि V के वैल्यू है R into ओमेगा. ओके, तो V R into ओमेगा सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम लोग को वेलोसिटीज के रेशियोज भी मिल गए. ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर. आपके पास कुछ क्वेश्चंस रहेंगे या रहेगा तो लेट मी चेक. आई जस्ट गिव यू अ मोमेंट फॉर यू गाइस टू राइट, जस्ट अ मिनट सो दैट यू कैन राइट दिस डाउन. Okay. Then we will actually solve question number 6. Okay. So if there are no questions, I'll go ahead. Erase this. So question number 6, we will see that question. So a block of mass 2 kg, block P of mass 2 kg slides down the surface and at the speed of 20 meters per second. So you have something like this. It's a mass of 2 kg and is sliding down the velocity of 20 meters per second. And they have set the local radius of curvature, that is here, is 2 meters. Okay, so the radius here is 2 meters. And this point Q, they were given the value of G, that is 10 meters per second square. The normal force in newtons at Q. They're asking you the normal force. Corrected to 2 decimal places. Okay. तो उन्होंने normal force पूछा जो ऊपर की तरफ एक्ट होगा इधर. Okay. Okay, so let's think about this question. How to do this first? So yeah. So the clue here is actually there is some curvature here, and there is a curvature, circular curvature of radius 2 meters. उसका मतलब क्या है कि there is going to be some amount of centripetal acceleration or centripetal force also coming into picture. Okay, ये hidden है data. It actually hidden है. Okay, उन्होंने normal force पूछा है, which is fine, which we'll calculate. So let me put something about. Yeah, तो आपको ये understand करना है कि इधर see ये sum, इसलिए ये sum थोड़ा सा conceptual है कि आपको पता होना चाहिए कि curvature है मतलब या उसका
curvature है, radius of curvature दिया है, तो there is going to be, so, some circular motion, and whenever you talk about circular motion, okay, there is going to be some acceleration, that is normal acceleration. So let's try to find out. So there will be weight acting downwards. Okay, normal reaction and will be acting in the upward direction. Okay, so W minus N. It will be, sorry, I'll write it this way. There is some centrifugal force, so N minus mg, that is my weight, will be equal to mass into normal acceleration. इस तरह से लिखा है मैंने इसको. Okay. Satej has given the answer as 420 newtons. I know I have to solve this. It might be 420 newtons, but if others collaborate with the same answers, I think you're right. Mostly it is right. I'm just not able to recollect right now. So n minus mg equal to m. तो ये क्या है? आपका नॉर्मल रिएक्शन इसको निकालना है. ये आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है. ये क्या है? दिस इज नथिंग बट योर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. ये आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. ओके, सो n will be equal to m g plus an. What values they are given? They are given the value of linear velocity, the moment it reaches here, right? And they are given the value of radius of curvature as well, that is 2 meters. So we know there are two forms of this equation, v square by r या ओमेगा स्क्वायर r. तो हम लोग ये वाला चीज यूज करेंगे क्योंकि आपको linear velocity भी पता है, आपको radius of curvature भी पता है. तो m g plus v square by r. I guess the mass is given as 2 kg. We'll substitute here 2. Acceleration due to gravity is 10. V square, that is velocity square. Velocity क्या है? 20 meters, right? 20 square, that is 400 by r. R is 2 meters. If I'm correct. 2 ones are 200. 210 into 2 will be, yeah, so there you are, right? It is 420 newtons. So it is very good. It is 420 newtons. Okay. So I hope this is clear. This was simple. The concept that I wanted to use here was centripetal force. Okay. Centrifugal force circular motion की टाइम आता है और ये जो centripetal acceleration होते हैं वो हमेशा inward directed होती है. Centrifugal force जो centrifugal जो बोलते हैं हम लोग force या centrifugal acceleration वो outward होती है. Okay. वो बाहर की तरफ जाती है. And if centripetal acceleration is not there, you're not going to have any circular motion. Okay. And when you talk about uniform circular motion, you have centripetal acceleration, but you don't have tangential acceleration. Okay. So here I'll try to jump into a concept or formula which says your A is given as an square plus at square. Their acceleration A is nothing but normal acceleration plus tangential acceleration. ये जो normal acceleration है centripetal acceleration बोलते हैं हम लोग. It is responsible for change in direction, and this is responsible for change in speed. और इन दोनों के formulas हम लोगों ने अभी देखे. an का formula है v square by r. It is v square by r, and at का formula हम लोगों ने लर्न किया था एक सम पहले, that was at was written as r into alpha. R into alpha. Okay, so I hope this is clear. Then, so I'll just wait so that you guys can write. And if there are any questions, I see no questions. So just wait for a minute, and then we'll go ahead.
Then we'll solve the, there are no question, then we'll solve the 7th question. I think they are for, yeah. So we'll solve the 7th question. So in the 7th question, they're saying the force of 100 newtons is applied to a circular disc. So you have a circular disc of 100 newtons, sorry, circular disc of mass 10 kgs. And there is a force applied here, 100 newtons. The radius is given as 1 meters. The radius here is given as 1 meters. If the disc rolls without slipping on the floor, the linear acceleration in meters per second square of the center of the disc. तो उन्होंने इसका acceleration क्या, center का acceleration क्या है वो पूछा है. Okay. Let's see. Now, कैसे करेंगे इसको? So you have some force F acting. Okay. So you have some force F acting. I can write this as, let's say, जब आप उसको force F 100 newtons apply कर रहे हो, there is some friction force which is acting in the opposite direction. Let's say F. कुछ friction forces opposite direction में act हो रहा है F. Okay. Then, what is the net force that is acting? It will be 100 minus the friction force equal to mass into acceleration. Okay, mass into acceleration. The disk is rolling without slipping. So, yeah, mass into acceleration. They are asking you what is the linear acceleration in meters per second of the disk. This center का जो point है ना, it is only going to have translation motion. Okay, एक line में move हो जाएगा. वो circular नहीं होगा. उसको मतलब it's going to be in a straight line. Even if this thing is rolling, it is going to move in a straight line this way. Okay, and here this will be 18. There is no direction change. There is only change in speed. जब भी हम change in speed के बारे में बात करेंगे तो हम लोग AN के बारे में बात करेंगे, AT के बारे में बात करेंगे, tangential acceleration के बारे में बात करेंगे. तो ये वाला, so net 100 आपने pull किया, opposite friction force आया, net force क्या रहेगा? Mass into acceleration to the right. So what I am going to do here is I'm going to write 100 minus F. Okay. Okay. Then ये 80 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? I can write this as m r into alpha. Okay. This is the first equation. अभी इसको solve करते हैं. तो can I write it this way? I into alpha will be equal to whatever is the friction force into this radius r. ये friction force into this radius. So ये friction force F into R. इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ. Okay. What is I? This is a circular disc. Circular disc का I क्या रहेगा? mr square by 2. So I can write this as m r square by 2 equal to F into R. ये torques को equate किया मैंने. ये friction force into this radius is going to give me this torque. And I into alpha, since it is rotating, right? I into alpha. So torque can also be given by this equation. Okay, so this R and this R gets cancelled. What remains is F will be equal to mr by 2. Correct? It will be mr by. Okay, there is alpha also remaining. Sorry. So yeah, that's what I was trying to do. There is one thing missing in the equation. So ये mr square by 2 आ गया multiplied by alpha. So what I get is mr by 2 alpha equal to f. Okay, ये वाला equation मुझे मिलता है. पकड़ो इसको second equation है ये.
ये वाला इक्वेशन ना मैं ये वाला इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करूंगा इक्वेशन नंबर 1 में, ऑलराइट। सो इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करूंगा तो क्या हो जाएगा, 100 minus this friction force m r alpha by 2 will be equal to m r alpha. I get 100 on left hand side. If I take this to the RHS, it becomes 3 by 2 mr alpha. And it becomes 3 by 2 mr alpha. What is this r and alpha actually? It is nothing but my tangential acceleration. And that is nothing but my linear tangential acceleration. That is what they are asking. So you don't need to substitute here as r into alpha. You can keep it, but it becomes simpler to solve later on. So 3 by 2 m dt into 100. And they have given the value of mass as 10 kg. And I guess that's it. आपको 80 इधर से निकल जाएगा. 2 into 100 will be 200 divided by 3m. M here will be 10. So what we get is 200 by 30 or 20 by 3, that is 6, is 18, 6.66, or you can write 6.67 meters per second. Okay, so answer आता है 80 का वैल्यू 6.67 meters per second square. Talking about acceleration here. Okay, so I hope this is clear. Any questions? Let's give a moment for guys to write down. So what we are going to, those who have joined late, we have started with mechanics part, and we will as we go ahead, we'll push in some strength of material, we'll also push in some machine design. We'll try to cover as many concepts as a recap. So this is NMR, कुछ चीजों की, कुछ concepts की, कुछ formulas की, okay, जो important है आपको पता होनी चाहिए. So if there are no questions, then we can go. Let me check. Okay. एक हाथ दूसरे क्वेश्चन जो बचे हैं लेकिन हम लोग करेंगे, पर क्वेश्चन नंबर 3 I remember whoever has told us, so we'll do that also, but let's proceed a bit ahead now, right? So now what I am हम लोगों ने क्या क्या देखा, इधर हम लोगों ने kinematics equation or projectile motion, then we learned about we also talked about centripetal acceleration, so uniform circular motion, and how rotational energies and kinetic energies, their formulas, etc., etc. There is one more concept, one more law of conservation of momentum. Law of conservation of momentum, quickly हम लोग एक बार आपको बताता हूँ क्या करता है. It is nothing but if in a system there are two bodies moving in a straight line. Okay, so let's say V1, V2. V1 is greater than V2. After some time, they are going to impact, and after impacting, this blocks start moving with V1 dash and V2 dash along the same line. So if you see in this system, there is no external force acting. And if there is no external force acting on the system, the momentum before collision and 1v1
plus m2 v2. The total momentum before collision will be equal to total momentum after collision, m1 v1 dash plus m2 v2 dash. ये आपका law of conservation of momentum है. It says कि if there is no external force acting on the system, then before collision वाला momentum and after collision वाला momentum दोनों same ही है. Okay. Then उसके बाद as we go ahead, हम लोगों ने ये भी स्टडी किया coefficient of restitution. तो coefficient of restitution होता क्या है? The value is given as E. Okay, can just someone put down the equation? Let's be interactive. It's like I'm only talking. There is no only one guy. Satish gave the answer. So coefficient of restitution का formula कोई put down करेगा? Comment box में. Something like V2 minus something ऐसा कुछ कहते हैं तो that would be appreciated. Yeah, we'll see. So V2 minus V1 and V1 minus V2. ये आपका coefficient of restitution है. Okay. क्या करता है? इसका value हम लोग को क्या बोलता है? There are three possible values that it can have. It can be 0, it can be 1, or this guy can lie between 1 and 0. Okay. Yes, thank you, Satish. I think आपने पहले आंसर किए थे. Yeah, thank you. You're right, and I'm right also. Glad you are right. So E is equal to V2 minus V1, V1 minus V2. Coefficient of restitution है. So E equal to 0. E equal to 0 मतलब क्या? V2 becomes equal to V1. मतलब क्या? दोनों एक साथ मूव होना चालू हो जाएंगे. What is that type of collision called? It's called as plastic collision. Okay, that is called as plastic collision. मतलब क्या? इनका कोलिजन होने के बाद जो पहले दो सेपरेट बॉडीज थे, अभी कोलिजन होने के बाद एक ही बॉडी बनके आगे जा रहे हैं. ओके, सो थैंक यू यश एंड रवीज. या इट लुक्स लाइक यू गाइस आर पेइंग अटेंशन. सो yeah, so after collision what is going to happen? In case of E equal to 0, they are going to act as one body. So plastic collision. E equal to 1 is ये क्या है? Elastic collision. अभी elastic collision में क्या होता है? Elastic collision में क्या होता है कि आपका kinetic energy भी conserve होता है. Momentum तो conserve है ही. Plastic collision में momentum conserve है, पर kinetic energy conserve नहीं होता plastic collision में. Elastic collision में momentum conserve है, kinetic energy भी conserve है. मतलब kinetic energy, total kinetic energy before the collision, that is half m1 v1 square plus half m2 v2 square will be equal to half m1 v1 square dash plus half m2 v2 square dash. Okay, total kinetic energy before and after collision भी same ही है. In case of elastic collision, ये एक important characteristics है उसका. उसके बाद अगर ये E का value 0 और 1 के बीच में रहा, then it is called as inelastic collision. तो फिर ये inelastic collision है. Inelastic collision में सिर्फ momentum conserve होता है, kinetic energy conserve नहीं होती. So सिर्फ एक ही केस में kinetic energy conserve होती है, वो है आपका elastic collision. And currently what you have in your syllabus is direct impact or central line impact. Oblique नहीं है, angular पे नहीं आएंगे. Okay, तो ये आपका सिर्फ ये केस है. Okay, ये एक concept था. Alright. ठीक है. तो let me tell you what are the things that we did till mechanics. We talked about statics में equilibrium, friction, truss. We talked about kinematic equations, kinetics. We talked about projectile. We talked about law of conservation of energy. We talked about UCM, and now we talked about law of conservation of momentum, collisions, elastic, inelastic, and plastic collisions. We did some formulas. We also applied D'Alembert's principle. We talked about Lami's principle, the Lami's theorem. Yeah, so these are the more crux issues or more crux concept that you should revise before going to your gate.
and engineering mechanics, and you can see engineering mechanics is more of a numerical data type favorite questions. So mostly उधर के आ जाते हैं. So yeah, I think we spent 1.5 hours on mechanics. Don't worry, I remember question number 3. I'll come back to that question. But let's proceed ahead to SOM, strength of materials kind of part. I don't know. So strength of materials में so जैसे बीच में मुझे मैकेनिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स याद आएंगे, कुछ मिस आउट हुआ रहेगा, कुछ बोला नहीं रहेगा, मैं बोल दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा वो टाइम. आपके दिमाग में कुछ है, आपको कुछ लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में डालो, राइट? So let's start off with strength of materials. So when we started strength of materials, सबसे पहला assumption था strength of materials में कि जो भी materials के बारे में हम लोग बात करेंगे वो isotropic materials है. ओके, पूरा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल यही assumption पे चलता है कि आपका मटेरियल आइसोट्रोपिक है और आपका मटेरियल होमोजेनियस है. ये दो इंपॉर्टेंट assumptions है. क्यों? The moment you make these assumptions, what happens is you have we will come to that. So let's not reveal the mystery right now. But yeah, the moment you make that assumption, one of the most important things happen. Okay, so yeah, isotropic है, homogeneous है, right? ये दो चीजें हैं. जब भी आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बारे में बात करोगे, आपको कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए. जैसे हार्डनेस क्या होती है, जो हम लोगों ने डिस्कस किया था. इट इज नथिंग बट द एबिलिटी ऑफ a मटेरियल टू रेजिस्ट परमानेंट डिफॉर्मेशन. ओके, ब्रिटलनेस, डक्टिलिटी क्या होती है, वी ऑल नो. मैलिएबिलिटी वी ऑल नो. We learned about creep. What is creep? It is nothing but a time dependent phenomena which causes elongation or which causes strain without any increase in stress. Okay, and that this phenomena is more prominent or dominant in case of high temperature. So आपके पास ज़्यादा temperatures है, elevated temperatures है, then over the period of time, although the value of stress is not increased, what is going to happen? We are going to have still strain. I think yes, you're talking about springs, right? In mechanics. Right? Newly added concept is nothing but springs in mechanics. In springs, I'm going to do some problems, 1 or 2 problems, while I start with machine design. So I know these topics are there. So yeah, newly added topic is in mechanics is springs. Screw jack is nothing but the application. Okay. So when you talk about friction के application screw jacks है. Okay, so that's a very common mistakes where students make कि screw jack बोला है, ये बोला है, वो बोला है. इसका मतलब ये नहीं कि उसके sums पूछेंगे, उसका applications पूछेंगे. And I don't think so. We have, if I can get a question on screw jack during the break time, I'll solve it definitely. Okay, so I test newly added topic. Yes, just say yes if you're talking about springs so that I can proceed ahead. Okay, let him answer till we will proceed ahead by the time. Yeah, I was talking about springs. So he was talking about springs and screw jacks. Right? Springs I am going to take. Right? It's a part of machine design actually. So I'm going to keep that. Yes, Savita, it is going to come in MD, but unfortunately they have added in case of mechanics in GATE syllabus. Ideally, it's a part of machine design, so it doesn't matter. Yeah, where was I? Yeah, I was talking about isotropic, homogeneous, and when you talk about stresses, when you talk about SOM, we talk about stresses and physical properties. So physical properties जैसे creep, जो time dependent phenomena है, hardness, malleability, ductility. We have stiffness, ability to resist deformation, okay, elongation and deformation. ये physical properties हम लोगों ने जो regular lectures में किए, एक बार go through करो. There are more factual type of questions which can be asked. Okay, so उसके बाद हम लोगों ने stress के बारे में पढ़ा था. So stress is inherent in strength of material. We know it is force per unit cross-sectional area. Okay. So when we talk about force per unit cross-section area, what kind of quantity it is? We know it's a tensor quantity. And when we talk about tensor quantities, we say it's a matrix.
So it's a 3 by 3 matrix for a 3D system and it's a 2 by 2 matrix for a 2D system. जो main diagonal elements है, they are nothing but your normal stresses. Okay, others are nothing but your shear stresses. Now there are 9 elements in this stress tensor. The moment you make the assumption of isotropic elements, isotropic materials, what happens is this and this value will be same. So tau xy becomes equal to tau yx. Tau yz becomes equal to tau zy, and tau xz becomes equal to tau zx. So this is what happens the moment you say that you have isotropic material. So from अभी 9 constants थे, 9 unknowns थे, जैसे आपको 3 निकल गया, 6 unknowns हो गए, और आपके पास 6 equations रहते हैं 3D system में. And using this equations, so this will be moment. Using these 3 equations, 6 equations basically, you can find out these values. Okay, इसलिए isotropic assumption बहुत important है. Stress का relationship ये था. इसके बाद हम लोगों ने Hooke's law के बारे में पढ़ा, that is epsilon into E. Okay, so Hooke's law क्या बोलता है कि your stress is directly proportional to strain up to proportional limit. Okay, so proportional limit is a point up to which the variation between stress and strain is linear. ये कब होता है? ये कब होता है? This is seen in your stress strain diagram. तो stress strain diagram में आपको एक quickly side में rough figure, proportional limit, elastic, proportional limit, elastic limit, and then ultimate failure. So elastic limit जो रहता है E, up to here, the moment you unload it, it's going to come back. Proportional limit is also within the elastic limit. मतलब क्या? कि proportional limit तक linear behavior है, इसके बाद आपका non-linear behavior है, इधर ये equation use नहीं होगा. इसको हम लोगों ने modify किया था और लिखा था P upon A delta L upon L into E. So delta L is actually written as PL upon AE. ये हम लोगों ने equation के बारे में study किया. Elongation, linear elongation, longitudinal elongation is remember this equation. I can modify this equation that in this way. Okay, P upon delta L will be written as AE by L. P upon delta L is nothing but can be written as stiffness K. Stiffness of that particular bar or rod K can be written as AE by L. Okay. Again, this term AE is also known as, this product is known as axial rigidity. इसको axial rigidity भी बोलते हैं हम लोग. Okay, A into E. तो ये equations हम लोगों ने study की. उसके बाद ये system तो simple है, uniaxial loading system है. ये single uniaxial loading system में stress strain relationship निकालना बहुत simple है. But when you talk about 3D systems, okay, 3-dimensional system, उसमें कैसे changes होंगे? Let's see that. Let's see those equations. उसके पहले हम लोग को Poisson's ratio लिखना है. New. Poisson's ratio को कैसे लिखते हैं? Lateral strain upon longitudinal strain. So we have lateral strain upon longitudinal strain minus to have a positive value, negative to compensate. So ये use करके हम लोग 3-dimensional system में कैसे निकालेंगे? What is epsilon x? Let's say in 3-dimensional system we have sigma x, sigma y, sigma z acting. So epsilon x कैसे निकालेगा? In linear straining along x direction, it is written as sigma x upon E minus mu times of sigma mu upon E bracket के बाद sigma y plus sigma z. Okay. Similarly, epsilon y लिखेंगे हम लोग. सिग्मा x plus सिग्मा z. वैसे हम लोग लिखेंगे एप्सिलॉन z. उसके बाद हम लोगों ने ये 3 इक्वेशंस यूज करके बोला कि जो भी आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन रहता है irrespective of any kind of geometry, it is always the addition of epsilon x plus epsilon y plus epsilon z. इन तीनों का एडिशन आपको epsilon b देता है. आपका
वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है। ओके, सो ये इक्वेशन हम लोगों ने देखे। Again, we also learned about the relationship between E, that is Young's modulus of rigidity, as well as volumetric K, that is bulk modulus. उसके बारे में भी हम लोग ने देखा। तो I'll quickly write that equations, relationship between this constants. E will be equal to 2G, 1 plus mu, and E will be equal to 3K, 1 minus 2 mu. Now, if you guys remember, ये दो इक्वेशंस यूज करके हम लोगों ने क्या किया था, एप्सिलॉन का म्यू का रेंज निकाला था। म्यू का रेंज क्या था? इट वाज बिटवीन -1 and 0.5 फॉर ऑल इंजीनियरिंग मटेरियल्स यूजिंग दिस टू इक्वेशंस। ओके, इसके बाद हम लोगों ने स्टडी किया था टेम्परेचर स्ट्रेसेस के बारे में। तो टेम्परेचर स्ट्रेसेस क्या आते हैं कि जब भी आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो देयर इज सम अमाउंट ऑफ एलोंगेशन, और टेम्परेचर को घटाओगे तो देयर विल बी सम अमाउंट ऑफ कंप्रेशन। Okay. So if there is a free elongation मतलब there is no restriction for the elongation to take place. So आपने एक मटेरियल ले लिया और आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया। The moment you increase the temperature, this is elongating. But when this is elongating, there is no restriction there. There is no barrier. There is nothing stopping it from elongating. In such a case, what will be the thermal stress? Sigma T will be equal to 0. So, in case of temperature stresses and strain, you can get stress to be equal to 0, although strain is not equal to 0. And thermal strain is not equal to 0 because you have some elongation. So, ये peculiar case है कि free elongation होगा तो thermal stresses 0 हो जाएंगे, पर मैंने इधर fix कर दिया, एक जगह पकड़ो fix कर दिया, दूसरी जगह fix नहीं किया और elongate होने दिया, तो भी ये free elongation होता है। In that case also it is 0, thermal stress is 0. अगर दोनों जगह फिक्स कर दिया मैंने, दोनों जगह बोला कि elongate ही मत होगी तरह। Now I have stopped its elongation, deformation completely. अभी thermal stresses आ जाएंगे। तो ये केस में क्या होगा? आपके पास thermal stress आ जाएगा कुछ वैल्यू, non-zero value, but since both of them are fixed, your epsilon t will be actually equal to 0. ये बोला था peculiar है stresses. थर्मल स्ट्रेस जब 0 होता है तो स्ट्रेन नहीं होता। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि थर्मल स्ट्रेस नहीं 0 होता और स्ट्रेन 0 हो जाता है। ऑलराइट, ये सिर्फ थर्मल स्ट्रेसेस में होता है। स्ट्रेसेस ड्यू टू एक्सटर्नल लोड won't behave that way. Why it won't behave that way? Because your stress only comes into picture when there is strain. Sorry, not T. Proper in Stokes law. And who causes stress? Cause and effect के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि स्ट्रेन आता है ना, इसलिए स्ट्रेस आता है, उल्टा नहीं। ऑलराइट, सो थर्मल स्ट्रेसेस में हम लोगों ने अल्फा के बारे में पढ़ा था। अल्फा इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। इसकी यूनिट्स हम लोगों ने देखी थी कि इट इज 4 डिग्री सेंटीग्रेड, इस तरह से है। ऑलराइट, एंड वी लर्न द यील्डिंग इक्वेशन। यील्डिंग सपोर्ट्स के बारे में हम लोगों ने बात की थी। वो एक इक्वेशन हमको इंपॉर्टेंट है पता होना। सो इस तरह का अगर आपके पास सपोर्ट है डेल्टा, ओके, ये सपोर्ट है आपके पास डेल्टा, एंड यूजिंग दिस डेल्टा, सो व्हाट विल बी द स्ट्रेस इंड्यूस्ड, वो आपको निकालना है। सो व्हाटएवर इज अ डिफॉर्मेशन, उसका करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस आएगा। सो लेट्स से टेम्परेचर T इंक्रीज हो गया, ओके, strain, thermal strain is given as alpha into delta T. ये equation है thermal strain का, right? So let's, what will be the elongation here? Okay, free elongation will be, original length इसका L है, तो L alpha delta T will be the free elongation of this minus delta, इतना elongation को हम लोगों ने रोक दिया, करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस आता है सिग्मा L अपॉन E। ओके, इसको आप रीअरेंज करोगे तो मिलेगा आपको E अल्फा डेल्टा T माइनस डेल्टा अपॉन, सो मैंने L इधर ले लिया नीचे,
एल एल कैंसिल हो गया, डेल्टा बाय एल आ जाएगा और आपके पास बचता ये सिग्मा, ये आपका सिग्मा टी। तो जितना एलोंगेशन को रिस्ट्रिक्ट किया ना उतना करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस का वैल्यू आ गया। ओके, ये यील्डिंग इक्वेशन है। अगर ये डेल्टा को मैंने जीरो कर दिया, मतलब इधर कुछ यील्ड होने ही नहीं दिया, पूरा फिक्स कर दिया इधर भी, तो आपका इक्वेशन चेंज हो जाएगा। ओके, then something went wrong here. So alpha delta t into L is the original deformation. Free deformation minus delta, correct? No, it's correct. It's correct. So sigma t अगर ये delta zero हो जाएगा, delta zero हो गया मतलब क्या? ये है ही नहीं। तो this will turn out to be what? Sigma t will be equal to alpha delta t into E. Alpha delta t into E. Okay. और मुझे आप ऑलरेडी पता है ये है आपका एप्सिलॉन टी एंड दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थर्मल स्ट्रेस दैट यू कैन गेट इन द सिस्टम। कब आ जाएगा ये? जब बोथ साइड्स फिक्स रहेंगे, और बोथ साइड फिक्स नहीं रहे तो आपको ये इक्वेशन यूज करना है। ओके, दिस इज व्हाट वी हैव लर्न। हम लोगों ने इसमें सीरीज अरेंजमेंट देखा, पैरेलल अरेंजमेंट देखा, ऑलराइट? सो वी हैव देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सीरीज एंड अरेंजमेंट एंड पैरेलल अरेंजमेंट आल्सो। So ये सिंपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन के बारे में हम लोगों ने बात की, ऑलराइट? उसके बाद let's quickly erase this. लोग सम्स देखते हैं, ये कॉन्सेप्ट है, तो हम सम्स देखते हैं। Let's start with sums. और उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स करेंगे। मैं चेक किया। Okay, so what we will do is we'll first take this sum and learn about another concept known as, okay, let's take sum number 15 in your EQ, page number 6. Okay, I just made some collection of sums, so we'll take concepts. So question number 15, the metal rod of initial length L0, page number 6 पे, question number 15. So a metal rod of initial length L0 is subjected to a drawing process. The length of the rod at any instant is given by this expression, and t is equal to L0 1 plus t square, where t is the time in minutes. They are asking you what is the true strain rate in per minute at the end of 1 minute. Okay. Okay. So let's see this sum. Question number 50. Yeah, again, it's a question number 50. So let's see this question. I think I missed this tonight. Yeah, so let's do this question. So they say LT L0 1 plus t square, where t is the time in minutes, the true strain rate in per minute is. So ये आपको लेंथ दिया है, मैंने true strain rate पूछा है. Okay, so true strain is given by natural log of L upon L0. Okay, ये आपका true strain का equation है. True strain का equation है, correct. So
they are asking about strain rate. So strain rate मतलब क्या है? d epsilon upon dt. ये आपका strain rate होता है. So what is the derivative of natural log? Can anyone tell? So d by dx of this term, what will be the value? Derivative of log, natural log of x, d by dx. क्या रहता है? Can someone help me here? The base. What is this answer? Just talk in the comment section. So what I'm going to suggest is I'll prefer that you guys help me solving this now. D epsilon upon dt. Okay. It is 1 by x. Okay. I thought 11 by x. Okay, yeah. 1 by x. So इसका 1 by x आएगा. मतलब क्या आ जाएगा? L0 by L हो जाएगा. Okay. So that's the value, and d by dt of L. Okay. Let me check now. Just a moment, let me check the equation. Just things like that. Yeah, I think the equation is correct as far as I know. Yeah, the equation is correct. So let's proceed. So he's saying one of the suggestion is substitute L0 in the term and then derivative respectively. We're talking substituting L0. Okay. And where should I substitute that? Here. We're talking about here. Yeah, you're talking about L0 here, and then you're talking to derivative, if I'm correct. So, suppose you might be telling me this L0 1 plus t square. I guess this is what you're talking about. I think so. This is what you're talking about. If you substitute it here, then I think so. There will be no harm done. Yeah, there will be no harm done. Yes, that's right. There is no harm done. So yes, you can substitute it here. Yeah, it will reduce most of the time, which is correct. So let's substitute it here. So natural log, this will be L0 1 plus t square upon L0. So this is what you're saying me. Then I get 1 plus t square here and epsilon. Okay, so let's differentiate this with respect to t. D epsilon into dt will be 1 upon 1 plus t square into this term, derivative of this, d by dx of d by dt of 1 plus t square. इस तरह से. Okay, तो इसको आप फिर से डेरिवेट करोगे तो ये 2t हो जाएगा and finally you get this as 2t upon 1 plus t square. That is your strain rate, d epsilon upon dt. Now they have given you what is, where t is the time in minute, the true strain rate in per minute at the end of 1 minute. तुमने बोला है t equal to 1 minute होने के बाद क्या है?
So t equal to 1 substitute करो इधर. So 2 into 1 is 2. 1 plus 1 square, that is 1. That is 2 that is 1. So the strain rate d epsilon by dt is 1. Yeah, I think this was simpler. Thank you, Yash. This was simpler. So yeah, so 2t upon 1 plus t square आ जाएगा. Substitute करने values को आपको true strain rate मिल जाएगा. और true strain rate मतलब क्या होता है? This is the actual ये ट्रू स्ट्रेन और ट्रू स्ट्रेस का मतलब क्या है? एक्चुअल स्ट्रेस क्या है और एक्चुअल स्ट्रेन क्या है? ये कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग? आपने जो डायग्राम इंजीनियरिंग जो स्ट्रेस स्ट्रेन का डायग्राम पढ़ा है, इधर में लेफ्ट साइड राइट साइड में जो बताया था, I have just shown in this way. This is under the assumption that your area remains constant throughout till failure. Okay, जो भी स्पेसिमेन है वो ऐसा होता नहीं है एक्चुअली. उसका एरिया कंटिन्यूअसली चेंज होते जाता है जैसे आपका स्ट्रेन का वैल्यू बढ़ते जाता है. तो एक्चुअल एरिया लेके जो स्ट्रेन या स्ट्रेस निकलता है उसको हम लोग ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन बोलते हैं. तो ट्रू स्ट्रेन जो है ना, ट्रू स्ट्रेन, उसका इक्वेशन ये है L upon original or the changed upon the original. Alright, ये इक्वेशन है. So this is the equation that you should remember. हमने strain rate पूछा है तो with respect to time पूछा है, इसके with respect to time मैंने इसको differentiate किया, and as Yash suggested, if you substitute here, lots of term gets cancelled and it became easy to solve. This is correct. So finally it turned out to be 2t upon 1 plus t square, 2 upon 2, that is 1. Okay. Then ये equation हो गया. उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे. Your questions then we'll go ahead. Question number 12 करेंगे. ये क्वेश्चन नंबर 12 में आप देखोगे a solid shaft of diameter d and length and is fixed at both the ends. A torque T is applied. So we'll talk about torque here. From left, at a distance of L by 4 from the left, as shown in the figure. So the important thing that you should remember when we talk about torque is torsional equation. T upon J, G theta by L by equal to tau by R. ये स्टिफनेस पार्ट रहता है इक्वेशन का, इसको स्टिफनेस रिलेशन बोलते हैं. एंड T अपॉन J इक्वल टू टाउ बाय R आप लिखोगे तो इसको बोलते हैं स्ट्रेंथ रिलेशन. ये दो इक्वेशंस के बारे में हम लोग बात करते हैं. एंड ये इक्वेशन, ये जो टॉर्शनल इक्वेशन इज ओनली यूज्ड फॉर सर्कुलर शाफ्ट. ये एक इंपॉर्टेंट लिमिटेशन हम लोगों ने स्टडी किया था, सर्कुलर शाफ्ट का लिमिटेशन है, तभी हम लोग इक्वेशन यूज कर पाएंगे. अभी इधर उन्होंने बोला है कि एक शाफ्ट है और इधर उन्होंने एक टॉर्क अप्लाई किया है, दैट इज T0. ये L/4 है एंड दूसरा वाला आपका 3L/4 है. और उन्होंने पूछा है what is the maximum stress developed in the system. Don't get over excited और देखोगे ऑप्शन में कि आपका 16 T0 by d cube है, लगे रहो वो आंसर आपको लिख दोगे. नहीं, इस तरह से नहीं सॉल्व करना है इसको. सो हम लोग क्या करेंगे ना, ये शाफ्ट को ना दो हिस्सों में बांटेंगे इस तरह से, ये 1 और 2, और ये दो ऐसा ट्रीट करेंगे कि ये दो एक पूरा शाफ्ट नहीं है, ये दो शाफ्ट है जो एक दूसरे को जॉइन किए हैं इधर, पर इनका मटेरियल और डायमीटर सेम ही है. तो part 1 is one part of the shaft will be treated as a separate shaft. Imagine this is a separate shaft. The other part 2 will be treated as a separate shaft itself. Okay, तो दो अलग-अलग शाफ्ट्स है ये, और दोनों को जॉइन किया है at this line here. So this is nothing but shaft in parallel. Okay, so shaft in series and shaft in parallel का concept है. So when I say shaft in series, that means their torque remains the same, but angular deformation is nothing but the total summation of all the angular deformation. So before going to that, I'll write the equation later on. This is shafts in parallel.
When I say shafts in parallel, T is written as T1 plus T2, and theta at the junction is the same. Theta 1 equal to theta 2. These are the relations for parallel arrangement. These are relations for parallel arrangement. So theta 1 is equal to theta 2. इसका मतलब क्या? T1 L1 G1 J1 ये वाला जंक्शन पे दोनों के थीटा सेम ही है, will be equal to T2 L2 G2 J2. Okay, so G are the same because they are made up of the same material. J value are the same because they are made up of the same diameter. And T1 into L1, T2 into L2. So T1 L1 will be equal to L by 4, and T2 will be 3L by 4. So if you see, this gets cancelled. What you get is T1 as 3 times of T2. Okay. In other words, T2 will be written as T0 by 4, and T1 will be written as 3 times of T0 by 4. ये T1 टॉर्क 1 के ऊपर है, T2 टॉर्क 2 के ऊपर है. ओके, अभी आप देखोगे इन दोनों को मैंने अलग-अलग शाफ्ट की तरह ट्रीट किया और फिर उनके ऊपर शाफ्ट्स इन पैरेलल का कांसेप्ट यूज करके I solved two equations, two relations for the shaft. अभी आप देखोगे इन दोनों में से इसका टॉर्क किसके ऊपर टॉर्क मैक्सिमम है? Sorry, the torque is maximum on 1 T1. तो ये T1 टॉर्क आपका मैक्सिमम है. जिधर आपका टॉर्क मैक्सिमम है उधर ही आपको मैक्सिमम शियर स्ट्रेस मिलेगा. तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के लिए फॉर्मूला क्या है? 16T pi d cube by id cube, that is your maximum shear stress, tau max for a shaft. Okay, what is T now? 3T0 by 4. So 16 3 T0 by 4 pi d cube will be equal to tau max. तो आप देखोगे 4 4 is 16, 4 into 3 12, 12 times of T0 by d cube, that is my tau max. So, and that is written as option number B. Okay. So, आपको ऑप्शन में 16 दिखे मार्क करके आ गए क्योंकि आपको पता है इक्वेशन यही रहता है और यूनिफॉर्म दिखेगा शार्प सीधा तो एक ही तो है नहीं. इसको तो अलग-अलग जगह ट्रीट करने. क्यों ऐसा करना पड़ा वही बोलता हूँ क्योंकि उन्होंने बोला स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर टॉर्क एक्ट हो रहा है. ओके, सो दैट इज अ क्लू फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि भाई इन दो सेक्शंस के दो शाफ्ट को दो सेक्शंस पे बांटो और उसको शाफ्ट इन पैरेलल का अरेंजमेंट यूज करो, ये इक्वेशन यूज करो और बाद में टाउ मैक्स का वैल्यू निकालो. जब आप शाफ्ट इन सीरीज के बारे में बात करते हैं तो शाफ्ट इन सीरीज क्या होता है? शाफ्ट इन सीरीज विल बी लाइक दिस. Okay, तो ये 1 वाला है 2 वाला. शाफ्ट इन सीरीज जब होता है तो ये टॉर्क on both the shaft remains the same. T1 becomes equal to T2, but theta at the free end. So if I name this as A, B, C, theta at the free end C will be theta 1 plus theta 2. इन दोनों का angular deformations का sum will be nothing but the total angular deformation at the free end. Okay, so this is shafts in series and shafts in parallel. ये concept था. So the reason behind taking this sum is to recap the concepts of torque or torsion. Okay. Now what is torsion? Okay. अभी torsion को थोड़ा सा लेके जाते हैं अलग concepts के ऊपर. में torsion is nothing but what we say is pure shear. Okay. So if there are no doubts in this question and no one is writing, then I'll just erase this. Okay. So what is torsion? Torsion is okay. If point B also has curve, then how to solve it? Just point. Okay. So you're talking about series arrangement.
So we'll be talking about this A, B, C. ये वाला इधर और इधर भी अगर रहा तो स्विच वाला तरफ इधर भी अगर टॉप रहा तो किस तरह से सॉल्व कर सकते T1 T2 इस तरह से रहा तो if that is what you are asking Pritish then again दो पार्ट में डिवाइड करो इसके ऊपर एक टॉर्क आएगा T1 ये टॉर्क T2 है ओके एंड ये प्रॉपर्टी T2 है तो इस T2 को T2 डैश करते हैं एंड T2 डबल डैश करते हैं और इन दोनों का जो एडिशन देते हैं T2 दैट विल बी यूज्ड इस तरह से ओके और ये इसका अपोजिट रिएक्शन हो जाता है तो मोस्टली ऐसे सेंस नहीं पूछेंगे रिजिड थोड़ा कंडीशन हो जाता है सो इस टॉर्क को हम लोग दो हिस्सों में बांटेंगे एक टॉर्क एक पार्ट एक पोर्शन ऑफ द टॉर्क इधर एक्ट होगा एक पोर्शन ऑफ द टॉर्क इधर एक्ट हो जाएगा देन यू कैन सॉल्व Okay. Fortunately, such kind of questions are not there in your syllabus. So, yeah. Then, let's talk about torsion. So, torsion मतलब क्या होता है? Pure shear. अभी pure shear का हम लोग क्या करेंगे? Morse circle draw करेंगे. Okay. Morse circle pure shear का कैसे आएगा? It will be a unit centered circle, if you remember. A unit centered circle. और इन Morse circle की क्या खासियत है? इसके x axis आपका normal axis रहता है और इसका जो y axis रहता है आपका shear axis रहता है. Okay? ये जो x axis है आपका normal और y जो है shear है, ठीक है? Then, in case of pure shear, you have origin centered circle. This Morse circle, wherever it cuts this sigma axis, that these are your principal stresses, sigma 1 and sigma 2. Okay, so sigma 1 or sigma 2 are nothing but the principal. Yeah, center at origin. Okay, thanks, Ramesh. I saw that answer a bit late. Yeah, origin centered circle. You're correct. So it's an origin centered circle. इधर कट होगा जिधर भी Morse सर्कल सिग्मा को कट होगा वो आपका प्रिंसिपल स्ट्रेसेस रहेंगे सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 इधर भी ये y एक्सिस पे कट होगा ये आपका टाउ मैक्स रहेगा in case of torsion sigma 1 and sigma 1 will be equal to minus sigma 2 okay अब mod values लेंगे sigma 1 का mod या sigma 2 का mod which is nothing but your tau okay so although you don't have external normal stress is acting on the system, but because of torsional shear, what has happened? Internally, आपको normal stress मिला, okay? In terms of principal stresses. So, अभी हम लोग quickly recap करेंगे कि Morse circle की characteristics क्या थे, okay? Morse circle का center हमेशा sigma axis के ऊपर लाया होता है, एक पहला point है. Sigma axis के ऊपर आपका center रहेगा Morse circle का, हमेशा. Okay. Now, the center of the Morse circle, sigma c, is actually written as sigma x plus sigma y by 2. ये आपका center का coordinates रहते हैं. And this is nothing but the normal stress. Normal stress on. This is nothing but the normal stress on tau max plane. Okay, normal stress on tau max plane. Okay, ये दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है. और एक कैरेक्टरिस्टिक हम लोगों ने लर्न किया था कि sum of normal stresses on two mutually perpendicular planes will always be a constant. So, sum of normal stresses of two mutually perpendicular planes. So, normal stress acting on plane at an angle of 30 plus normal stress acting on plane at an angle of 120. So इन दोनों का जो addition है normal stresses का, जब this two normal stresses are acting on planes which are mutually perpendicular to each other, it is always a constant. और हम लोगों ने स्टडी किया था ये constant क्यों आता है क्योंकि it represents the center of the Morse circle which is not going to move for a given stress tensor.
ओके, ये तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स लर्न किया था। चौथा चीज हम लोगों ने क्या लर्न किया था कि जब भी आप मोर सर्कल में किसी स्ट्रेस को लोकेट करने जाओगे ना, तो जो भी एंगल आपको दिया है उसका डबल करोगे। ओके, सो लेट्स से आपको निकालना है सिग्मा एंड टाउ का वैल्यूज एट 30 डिग्री प्लेन। You will take this 30 degree value, you will double this value to 60, and you will draw in the anti-clockwise sense a line at 60 degrees. So this actually represents the plane of 30. ये 30 degrees वाला plane actually represent कर रहा है आपको, and इसके ऊपर का जो normal stress रहती है ना, sigma 30 and tau 30, ये values आप ये coordinate से निकाल सकते हो। ये आपका fourth characteristic होता है मोर सर्कल का। Alright, so मोर सर्कल ड्रॉ करने के लिए स्टेप्स कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है। स्टेप्स आई क्विकली से, तो ये चार इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थे। पहला स्टेप क्या है, मोर सर्कल के लिए आपको निकालना है सिग्मा एक्सिस बना हुआ है एक्स एक्सिस, टाउ एक्सिस बना हुआ है वाई एक्सिस। ये आपका पहला स्टेप है। सेकंड स्टेप आपका क्या रहता है, आपको स्केल बोलना है कि कौन सा स्केल लेना है। थर्ड स्टेप आपको सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई के जो वैल्यूज होते हैं वो आपको लोकेट करने हैं ऑन द सिग्मा एक्सिस। Then, using these 2 points for sigma, you drop 2 perpendiculars in opposite sense, and their lengths are such that it is equal to tau. बाद में हम लोग उनको join करके center निकालते हैं। ये steps थे, पर आपको steps याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको characteristics याद रखो। Okay, questions ऐसे भी आ सकते हैं कि मोर सर्कल कौन सा सही है, कौन सा गलत है। अगर मोर सर्कल का सेंटर इधर बताया है on tau axis, कभी नहीं हो सकता राइट, कभी भी नहीं हो सकता, तो ये गलत हो सकता है। तो अगर आपको आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ देम इज करेक्ट और इनकरेक्ट, ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। अभी एमएसक्यू क्वेश्चंस पूछते हैं, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस, तो ऐसा ये दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर कैंडिडेट फॉर दैट। कैसे, मोर सर्कल के क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो चार ऑप्शंस रहेंगे, उसमें से 2 या 3 ऑप्शंस आपको सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। So you should know all the characteristics of Mohr circle. So one of the question is this: following are the characteristics of a Mohr circle. Option A, option B, option C, option D. Maybe A, B, and C, or maybe A, B is right. You have to mark that. Okay. Now, when we talk about Mohr circle, wherever the Mohr circle intersects, we know it is principal stress. अभी $1 billion क्वेश्चन ये है कि ये प्रिंसिपल स्ट्रेस होती क्या चीज है। ओके, प्रिंसिपल स्ट्रेस एक नॉर्मल स्ट्रेस है, पहली चीज तो ये नॉर्मल स्ट्रेस है, और इसका वैल्यू मैक्स रहता है तो मिनिमम रहता है। मतलब ये प्रिंसिपल स्ट्रेस मैक्सिमम या तो मिनिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है जो सिस्टम में एक्ट होती है। ओके, उस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेस। मतलब एक गिवन स्ट्रेस सिस्टम में, ओके, नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू सिग्मा मैक्स के ऊपर नहीं जाएगा और सिग्मा मिन के नीचे नहीं जाएगा, तो आपको बाउंड्री कंडीशंस मिलते हैं। एक मैक्सिमम वाला कंडीशन मिलता है, एक मिनिमम वाला कंडीशन मिलता है, और जिस प्लेन के ऊपर ये नॉर्मल स्ट्रेस प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एक्ट होते हैं वो प्लेन के ऊपर शियर स्ट्रेस का वैल्यू 0 हो जाता है। सो ऑन मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन्स और प्रिंसिपल प्लेन्स shear stresses are 0, and on shear plane, on maximum shear plane, normal stress is not 0, but on maximum stress plane, normal stress is not 0 because it represents center of the Mohr circle, and center of the Mohr circle will lie on the sigma axis. Okay, तो ये हो गया प्रिंसिपल स्ट्रेस। प्रिंसिपल स्ट्रेस का क्या इक्वेशन था, इक्वेशन हम लोग देख लेते हैं। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस का इक्वेशन था सिग्मा 1, 2 sigma x plus sigma y by 2 plus or minus root of sigma x minus sigma y the whole square plus tau xy square। ये जो है आपका sigma 1, 2 डिनोट करता है। Whatever is under the root sign, that is your tau max. That is your tau max. And if you want to find out the principal plane, you just have to find out the first principal plane given by this equation. Tan 2 theta will be equal to 2 times of tau x sigma x plus sigma x minus sigma y. Using this equation, the second principal plane can be evaluated because two principal planes are separated by 90 degrees. So इधर से आपको theta 1 मिला
So theta 1 plus 90 degrees will be your theta 2. Using this, you can also find out the maximum shear plane. Maximum shear plane and principal planes are 45 degrees apart. So your tau max plane का angle क्या रहेगा? Theta 1 plus 45. There are again two tau max planes, and those two tau max planes are separated by 90 degrees. दो principal planes by 90 degrees, दो tau max planes by 90 degrees, principal and tau max plane by 45 degrees. So इसके ऊपर ये theta 1 रहेगा इसका, and tau max theta 2 will be equal to theta 1 plus 45 plus 90. ये चौथा वाला एंगल आएगा. तो once you know this, you can calculate all the angles. ये principal stress था. Before breaking for break, there was one more equation. Okay. So वो क्या equation था? If you want to find out sigma normal stress at any plane, we have to use this equation: sigma x plus sigma y by 2 plus sigma x minus sigma y by 2 cos 2 theta plus tau xy sin 2 theta. Okay, and tau theta on any plane can be written as sigma x minus sigma y by 2 sin 2 theta minus tau xy cos 2 theta. ये इक्वेशन कोई भी प्लेन के ऊपर हम लोग को सिग्मा का वैल्यू निकालना है या टाउ का वैल्यू निकालना है तो हम लोग यूज कर सकते हैं. ये एनालिटिकल तरीका है, मोर सर्कल ग्राफिकल तरीका था. ठीक है. ये इक्वेशंस जो है ना मोर सर्कल या प्रिंसिपल स्ट्रेस की इक्वेशन है या ये वाला इक्वेशन, ये इक्वेशन आप कोई भी टेंसर क्वांटिटीज के लिए यूज कर सकते हो. एक्सक्यूज मी. सो कौन से टेंसर क्वांटिटीज है आपके लिए? मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, ओके, स्ट्रेन एप्सिलॉन, सिग्मा स्ट्रेस एंड चौथा वाला प्रेशर. इन आपको सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है यूजिंग दिस रिलेशन. सिग्मा x जो लिखा आपको एप्सिलॉन x डालना है या ix डालना है या px डालना है. इधर भी आपको एप्सिलॉन y सिग्मा y दिखा, उधर एप्सिलॉन y डालना है, iy डालना है या तो आपको डालना है py. जिधर भी आपको tau xy दिखा उधर आपको डालना है phi xy by 2. ये इंपॉर्टेंट है shear strain के लिए, by 2 नीचे लिखना पड़ता है. ये ixy एंड क्या है pxy. ओके, ये वाली चीज है. सो ये आपको रिप्लेस करोगे ना ये सभी इक्वेशंस में, आपको जो इक्वेशंस मिलेंगे i एप्सिलॉन ऑफ px और या px के टर्म्स में मिल जाएंगे. Alright, and more circle and these equations again I'm repeating can be used for any tensor quantities. So those tensor quantities are epsilon, I, p, and sigma. Okay, so I think so we'll break for a break and after that we'll solve some sums and do some concepts of SOM and machine design. Okay, so see you by 15 minutes. It's 6:30 sharp.
Okay, so I guess we can start moving ahead now. So that's we did the sum, then let's move to the next question. Okay, so this is kind of question number 11 of strength of materials. So उन्होंने बोला है, according to von Mises theory, distortion energy theory, the distortion energy under three-dimensional stress is given by which equation? So the reason behind taking this question is to just quickly again recap what are different failure theories. Three important failure theories. So first we'll talk about von Mises distortion energy theory. So von Mises distortion energy theory is related to ductile materials. Or ductile materials, if you want more accurate analysis, we go for von Mises theory. It says that it is shear stress is 1 by √3 times of the yield value. ये आपका von Mises theory है. Maximum shear stress theory क्या बोलता है? Tau is sigma y by 2. Both of these theories are related to ductile materials. Okay. Then normal stress or principal normal stress theory, वो क्या बोलता है? Your sigma का value is equal to mod of sigma x or mod of sigma y. Okay, that is nothing but so sigma max value basically. Sigma will be equal to sigma y. So this is the condition for principal theory, principal normal stress theory. It is used for brittle materials. What does this theory indicate is, this theories indicate the conditions of failure. Okay. So von Mises distortion energy theory, उन्होंने बोला है कि what is the distortion energy under three-dimensional stress state. So the answer to this question is option number C. Okay. So distortion energy U. और ये distortion energy is comprised of two parts in case of von Mises theory. It is volumetric strain energy plus distortion energy. Okay. इन दोनों का जो okay, so there are questions from here. Sir, when to use 16T pi d cube? What is necessary condition? If it's a shaft like this, okay, और बीच में नहीं दिया है, किधर इंटरमीडिएट नहीं दिया है, तब हम लोग 16T pi d cube वाला इक्वेशन यूज करेंगे. I think I'm looking at okay previous. I didn't answer that question. That's why it turned my attention. Okay, it's not current question. Right? So distortion energy जो रहती है वो दो parts की होती है, volumetric and distortion. अब maximum shear stress theory में आप देखोगे ना तो volumetric नहीं रहता, सिर्फ distortion energy theory रहता है. और वो distortion energy, strain energy रहता है. तुमने क्या पूछा है von Mises में? What is the distortion energy under three-dimensional straight? तो ये वाला condition है teacher. So UD will be actually option number C. 1 plus mu upon 3P sigma 1 square plus sigma 2 square plus sigma 3 square minus sigma 1 sigma 2 plus sigma 2 sigma 3 plus sigma 3 sigma 1. Okay, I want you guys to by heart this equation because there is a possibility they might ask sums, but you should know what is sigma 1, sigma 2, sigma 3 are actually. These are principal stresses. पर आप तो बोलोगे भी प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हम लोग ने 2D सिस्टम के लिए लग ये सिग्मा 1 और सिग्मा 2 ही निकाले, सिग्मा 3 किधर से निकाले? तो सिग्मा 3 के लिए हम लोगों ने स्टडी किया था एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन था. ओके, इन सिग्मा, सो सिग्मा क्यूब minus I1 into sigma square plus I2 into sigma minus I3 equal to 0. ये वाला इक्वेशन हम लोगों ने स्टडी किया था. ये इक्वेशन
को हम लोग जब सॉल्व करेंगे उसके लिए I1, I2, I3 के वैल्यूज निकालते थे. I1 was nothing but the trace of the stress tensor. I2 is nothing but sum of minors of main diagonal, and I3 will be determinant of the matrix. Okay, so this I3 will be the determinant of the matrix. ये आपका I1, I2 और I3. The moment to substitute this, solve this equation, you get three values: sigma 1, sigma 2, sigma 3. Those are your principal stresses. The only point to note here is you have to learn this equation and remember this equation, and also take care of the point that sigma 1, sigma 2, sigma 3 are nothing but my principal stresses. So let's move ahead. उसके बाद 13th वाला प्रॉब्लम देखते हैं उसके सेम पेज पे. 13th प्रॉब्लम. So I'll just erase this part. इसमें इस तरह से डायग्राम दिया है. चलो इसको हम लोग ना वैसे है वैसे बनाते हैं. So like this, there is some hinge here, and there is some P, and there is some L. Both of them are L. And they are asking you the frame of two equal arms of equal length L is shown in the figure. The flexural rigidity of each arm of the frame is EI. दोनों का फ्लेक्सिबिलिटी EI है. The vertical deflection at the point of application of the load P is. तो इधर जो vertical deflection क्या होगा? That's a good problem. So let's solve this. So let's solve this. So उन्होंने बोला है कि फाइन अभी जब इधर फोर्स अप्लाई करोगे तो क्या होगा? This guy has a tendency to go down. So I draw this diagram here. So you have this here. The hinge है, ये आपका P है. Okay, let's erase this. So the moment you pull this down, this guy, this arm here, let's say there will be arm. No. So I name this arm as 1, this arm as 2. This, when you're pulling this down, what is going to happen is this thing will try to go this side. This thing will try to rotate this way, but due to the support, it is not going to rotate. Imagine करो अगर ये support होता ही नहीं. Imagine करो ये support होता ही नहीं. तो क्या होता? अगर ये support नहीं होता तो अभी क्या होता? तो ये ऐसे डिफ्लेक्ट होता. इस तरह से डिफ्लेक्ट होता. अगर ये support नहीं होता तो इधर का support में निकाल दिया तो ये इस तरह से डिफ्लेक्ट होता और ये ऐसा नीचे की तरफ आता डेल्टा 1 और ये भी डेल्टा 1, दोनों डेल्टा 1 डेल्टा 1 होते हैं. अगर ये सपोर्ट नहीं होता तो ओके इसी तरह से आपको सॉल्व करना है. ओके यही अजम्पशन देखिए कि अगर नहीं है तो इस तरह से मूव होगा. अभी जो डेल्टा 1 हुआ ना, ये डेल्टा 1 किसका डिफॉर्मेशन हुआ? अभी देखो क्या होगा. ये क्यों डिफॉर्मेशन होता है? क्योंकि ये जो फोर्स पी है ना, बिकॉज़ ऑफ दिस सपोर्ट व्हाट इज गोइंग टू हैपन. दिस इज काइंड ऑफ अ बिट difficult to explain, but let's imagine कि ये P इधर है, because of this there is a reaction that is going to come. Okay, the reaction P इधर आएगा same. If you solve this by Vidyalankar theorem also you get the same thing, right? ये reaction support देगा और ये जो arm है ना, इसके ऊपर इस तरह से force action reaction force apply करेगा support के ऊपर, right? So ये जो force P है ये इस तरह से इसको डिफॉर्म करने की कोशिश करेगा. Alright, so this force P is trying to deform this length 1 bar 1 along clockwise sense this way. तो इसका deformation will cause this thing to go down. So ये जो arm 2 है ना, it is comprised of two deformations. Deformation 1 and deformation 2.
ये डेल्टा वन जो डिफॉर्मेशन आ रही है ना, ये डिफॉर्मेशन, ये लेंथ जो है, ये बार वन, ये जो आर्म है उसका डिफॉर्मेशन है। कैसे? क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस फोर्स P एंड बिकॉज ऑफ दिस सपोर्ट ऑफर्स अ रिएक्शन एंड उसका एक्शन विल बी दिस आर्म exerting a force on the support as well, equal and opposite in magnitude and direction. Alright, so न्यूटन्स का थर्ड लॉ, तो ये P आपको डिफॉर्मेशन देगी इस तरह से डेल्टा वन। तो आपको ये डेल्टा वन अगर निकालना है तो अज्यूम क्या करना है कि ये सपोर्ट नहीं है, और अगर सपोर्ट नहीं है तो ये P की वजह से क्या डिफॉर्मेशन होगी इसकी। सो दिस P इज एक्चुअली एक्टिंग एट द टिप ऑफ दिस आर्म, तो ये जो P है ना इधर एक्ट हो रहा है, तो इस तरह से आप करें, ये वन है आपका, इधर P एक्ट हो रहा है और इधर आपका एक्चुअली सपोर्ट है। ओके, सो दिस causes a deformation of delta 1. This is nothing but cantilever with the point load at the end, और इसका वैल्यू क्या रहेगा, delta 1 will be equal to PL cube upon 3EI, delta 1 बनेगा। अगर ये सपोर्ट नहीं अज्यूम किया, ये P will cause this arm to deform along this way in the clockwise sense, and then that deformation delta 1 can be found out by using this equation PL cube upon 3EI. Same equation, same delta 1 नीचे भी हो जाएगा इधर, okay, ये भी नीचे हो जाएगा delta 1। Alright, अभी delta 2 क्या है? delta 2 is nothing but the deformation of this arm 2। ये delta 1 क्यों आया डिफॉर्मेशन? क्योंकि arm 1 डिफ्लेक्ट हुआ, अभी arm 2 भी डिफ्लेक्ट हो रहा है because of the force P at the free end। इसका डिफॉर्मेशन क्या रहेगा? Again, delta 2 will be written as PL cube upon 3EI। Why? Because इसका arm 2 का भी लेंथ L है, ये भी जो arm 2 है, it can be treated as a cantilever with the point load at the free end, उसके लिए इक्वेशन यूज किया, and it is again having the force P, so this delta 2 will have actually the same value, PL cube upon 3EI। Now total deformation delta will be delta 1 plus delta 2, हम दोनों को ऐड करोगे तो आपको आ जाएगा 2PL cube upon 3EI, 2PL cube upon 3EI। So is there, yeah, it is option number B, it is option number B। तो एक बार क्विकली रिपीट करते हैं, तो ये टर्म क्यों लिया हम, ये चीज हम लोगों ने क्यों लिया, इधर मैंने वेरिएबल्स थ्योरम यूज करके, मेंटल यूज करके बेसिकली निकाला कि ये जो आर्म है, आर्म 1 और आर्म 2 से दो आर्म्स दिए गए, इसके ऊपर P फोर्स है, तो दिस इज गोइंग टू कॉज अ मूवमेंट ऑफ P इनटू L, बट इधर आपका सपोर्ट है, ये मूव नहीं हो सकता, इसके लिए इसको रिएक्शन मिलेगा, और ये रिएक्शन का वैल्यू क्या रहेगा, P रहेगा। ओके, हाउ? बाय यूजिंग वेरिएबल्स थ्योरम, P इनटू L, P1 into L1, P2 into L2, L1 and L2 are the same, so P1 will be equal to P2, that is nothing but my force P। अभी ये एक्शन रिएक्शन फोर्सेस होंगे, अगर ये फोर्स P ये आर्म के ऊपर एक्ट हो रही है और मैंने इसको अज्यूम किया सपोर्ट नहीं है, तो ये डिफ्लेक्ट हो जाता है बाय डेल्टा 1, एंड दैट डिफ्लेक्शन कैन आल्सो बी सीन हियर। ये जो डेल्टा 1 डिफ्लेक्ट हो गया आर्म 2, it is not because of the force, it's because arm 1 has deflected by delta 1, it rotated the entire thing, and ये फोर्स की वजह से आर्म 2 एडिशनल डेल्टा 2 से डिफॉर्म हो रहा है, तो ये डेल्टा 1 जो ऊपर वाला है ये आर्म 1 का डिफॉर्मेशन है, डेल्टा 2 जो है ये आर्म 2 का डिफॉर्मेशन है, एंड टोटल डिफॉर्मेशन ऑफ 2 विल बी डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, एंड हम लोगों ने इसको ऐड कर दिया। ओके, सो इधर से हम लोगों ने डिफ्लेक्शन, स्लोप्स एंड डिफ्लेक्शन के कुछ फॉर्मूलास, एक फॉर्मूला लर्न किया WL cube upon 3EI कैंटिलीवर का। ओके, ऐसे कैंटिलीवर का पॉइंट लोड है, अगर कैंटिलीवर बीच में किधर एक्ट होता है, लेट्स से ये L है टोटल लेंथ, ये E के ऊपर एक्ट हो रहा है, तो ये W है, तो इसके लिए फ्री एंड डिफॉर्मेशन विल बी व्हाट, it will be, this is the free end deformation delta will be W A cube upon 3EI plus this will be R minus R into theta। इसका स्लोप क्या रहेगा,
theta, it will be W A square upon 2EI for this case, and we'll use this W A square upon 2EI. ये हो गया theta into L. L is this much part, L minus A. The addition of both of them is going to give you the deformation at the free end. इस तरह के हम लोगों ने formulas किए थे. Okay. अगर ये UDL रहेगा तो W A cube upon 48 EI. Okay, so that's how we proceeded. So let's slopes and deflection period. And there are standard formulas, and I have recommended in the lecture also regular classes. You remember the standard 9 cases, 9 to 10 cases, and your job will be much simpler. Okay, in case of slopes and deflections. Let's try to solve another problem. Question number 14, I guess. No, it's incorrectly printed. So yeah, question number 14, I wanted to do that, but the diagram is not present. So what I will do is, I will draw the diagram here. Okay, and it's already given. So if you have gate EQ with you guys at home, then 2011 में ये प्रॉब्लम पूछा गया था. जिनके पास गेट EQ नहीं है, मैं इधर डायग्राम ड्रॉ करता हूँ. I'll be away for a moment, quick, and I'll be back with the. Yeah, I'm back here again. So let me draw the diagram. The diagram is missing. So for those who guys who don't have gate EQ, I have to draw. Okay, this is the diagram. So this is actually a linked question. 2011 में पूछा गया. इधर P है, ये thickness P है, total length L है. Okay, and yes, this was alpha, and distances were measured x along this way. In the gate EQ, this was a linked data question. Yeah, the question 14 is incomplete actually. That's what I'm trying to do here. So this was the diagram, okay, and this was linked data question. So before this question, there was a question: okay, what is the area moment of inertia about the neutral axis? So that value we had to reuse. So this two questions should have been printed together. Okay, but we are not going to solve that question. We are going to use the result of that question. So for your case, what I'm going to write here is we are going to use. Let me check with EQ whether it's correct. Yes, the EQ. They are asking you the maximum deflection of the beam. So correct. So we are going to use the result of the previous question. We need to use the result of the previous question. The result of the previous question was Bx T cubed upon 12F. We are going to use this equation. This was area moment of inertia. That is nothing but your I. Okay, at a distance of x. T square is use करना है. Maximum deflection के लिए. So maximum deflection कैसे निकालेंगे? इसके लिए हम लोग एक अलग इक्वेशन यूज करेंगे स्ट्रेन एनर्जी का. Alright. So स्ट्रेन एनर्जी का इक्वेशन क्या है? U integral 0 to L m square dx upon 2 times of
ER. ये वाला equation है. So this is the new equation that we are going to learn. So this is strain energy given by moment acting at any section X and I above that section X. ये equation से हम लोग को strain energy का value मिलेगा. So you know, just remember this equation and we can write this strain energy as half P into delta as well. P is nothing but the force that is acting. Delta is nothing but a deformation that is produced for this beam, right? And using this relation, I'm going to find out what is the deformation produced in the beam. That is delta. So let's take a section here at a distance of x. So what will be the moment? It will be integral 0 over the entire length. It will be P into the distance x the whole square dot dx upon 2p and I at that section. So I told you we are going to use the result of the previous question, that is bx t cube upon 12. So it is bx t cube upon 12l. So हम देखेंगे इस इक्वेशन थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे. So what we get here is, write the result, 6 p square l e b t cube 0 into l x dx. ये आ जाएगा आपका स्ट्रेन एनर्जी का सिंप्लीफाई करके. ये क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेन एनर्जी का ये फॉर्मूला. और मैंने इसको क्यों इक्वेट किया, विल सी दैट फर्स्ट आल्सो. ये इक्वेट क्यों किया, क्योंकि ये जो फोर्स P है ना वो ग्रेजुअल फोर्स है. ओके, एंड व्हेन यू टॉक अबाउट ग्रेजुअल फोर्स, इफ यू ड्रॉ दिस डायग्राम ऑफ P डेल्टा, ये P डेल्टा इस तरह से आता है. The area under this P delta graph gives you strain energy. The area under P delta graph gives you strain energy. What is the area under P delta? The area of this graph, half into base into height. So this will be height P and base is delta, half P into delta. This is strain energy. Okay, half P into delta को substitute करोगे, delta just निकलेगा. Right. So इसको जब आप simplify करोगे, तो what we get is, अभी इसमें क्या करना है, सिर्फ x square by 2 सब्स्टिट्यूट करना है आपको. So integral will be 6p square l e b t cube x square by 2. So it is l square by l square by 2. So what I finally get here is, after simplifying, 3p square l, if you l cube upon e b t cube. You guys can go ahead and solve and get the answer as well. No need to wait up for me. Once you understood the process, and just the moment you get the answer, you can just drop it in the comment box. Whatever is the answer. Okay, so what I just needed, 3 times of p square r cube e b t cube. Now this I'm going to equate with half p into delta. So half p into delta will be equal to 3 p square l cube upon e b t cube. ये p और ये p cancel हो जाता है. So we get 6 into, so we check. So we get 2 into 3, that is 6 p l cube e b t cube. So that is option number D. That is option number D. Correct. That is correct. Option number D. So the important point to take away from this is this equation. Okay. And the graph that which I had drawn earlier for gradual load, the area under the curve of P delta graph will be nothing but your strain energy. Okay. And what is this then? Okay, what is this equation? Just write it here. Since we're talking about strain energy,
What does this equation suggest? What is this equation known as? Half into sigma into epsilon. इसको क्या बोलते हैं? ये क्या देता है? Can somebody answer this in the comment? I'll have a drink of water. Yeah, it is correct, Pratish. It is per unit volume. So this is strain energy per unit volume, also known as modulus of resilience or modulus of toughness, depending upon which point of stress strain curve you are using. So if you're using up to elastic limit or proportional limit, then it is modulus of resilience. So this is per unit volume actually. This is per unit volume. So area under, I hope you guys have just keep this on one side. So area सिग्मा एप्सिलॉन ग्राफ आप देखोगे लीनियर इस तरह से हो जाता है. इधर तक ये लीनियर है ना, इसके अंदर वाला जो एरिया है हाफ सिग्मा एप्सिलॉन, that is modulus of resilience. That is modulus of resilience. Okay. So that is given by stress strain. P delta gives you total strain energy. Important point. So this question is done. So yeah, let's proceed ahead with some other question. So let's look at question number. Is that question missing? Yeah, that question is missing from here, but we'll do another question. So, question number 16. Let's do question number 16. Question number 16 क्या है? A rectangular hole of size 100 mm into 50 mm is to be made on a 5 mm thick sheet of steel having ultimate tensile strength and shear strength of 500 MPa and 300 MPa. Okay, and the hole is made by punching process. Okay, the hole is made by punching process, neglecting the effect of clearance. What is the punching force in kilonewtons is? So there is a rectangular hole of size. Okay. So this is some sheet, let's say. This is some sheet, and this is its side view. Yeah, आपका top view है. And इसके ऊपर एक hole punch कर रहे हैं लोग. And that hole is 100 into 50, and this is 5 mm thick. They are asking you what is the punching force. Now, if you want to punch the hole, आपको punch करना है hole को, तो आपको क्या करना होगा? ये जो punching process होगा, it is going to shear off. तो आपका जो thickness रहेगा, for example, इसको हम देखेंगे. So if you want, if with the moment you punch it this way downwards, this is the surface area which is coming in contact. ये area को shear करते हैं. इसको हम लोग shear करते हैं. So one thing that you should know now is they are given ultimate tensile strength as well as shear strength. We are going to use the shear strength. Okay, we are going to use the shear strength. That is decided. Now we want to find out the force, so we should also know the area. अभी area क्या रहेगा? इसका surface area रहेगा ना. ये जो force है, ये जो squares है,
रेक्टेंगल है उसका सरफेस एरिया रहेगा। सरफेस एरिया क्या रहेगा, ये वाला जो सरफेस है, मतलब ये होल इस तरह से कट होगा, इसका सरफेस एरिया, इसका सरफेस है, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इन चारों एरियाज का एडिशन आपका सरफेस एरिया रहेगा। यू शुड एलिमिनेट द टॉप सरफेस एंड द बॉटम सरफेस, क्योंकि वो शेयर नहीं हो रहे। साइड के जो चार फेसेस है ना रेक्टेंगल, रेक्टेंगल ब्लॉक है ये, तो ब्लॉक के जो साइड के चार फेसेस है ना वो शेयरिंग एरियाज है आपके, टॉप एंड बॉटम शेयरिंग नहीं है। तो वो चार फेसेस का हम लोग एरिया सम कर देंगे और जो सम किया हुआ एरिया रहेगा आपका शेयरिंग एरिया रहेगा। सो लेट्स सी, तो ये 100 into what is the right, yeah, it is 5, right? So 100 into 5, 100 into 5, so surface area will be 100, ये वाला लेंथ और उसका ये डेप्थ 100 into 5, ये एक फेस है, क्योंकि ये फेस और ये फेस दोनों सेम ही है, पैरेलल एक दूसरे से, तो मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस ये और ये फेस दोनों पैरेलल है, उनका लेंथ है 50 into 5, 50 into 5 एक फेस है, ऐसे दो फेस पैरेलल है, so multiply by 2. You have this direct formula also, did it from scratch. Yes, आप shear strength use करेंगे, correct. Okay, so 500 into 2000 and this is 250 into 2, that is 500. So 1000 plus 500 will be 1500 mm square. Okay, ये आपका सरफेस एरिया हो जाएगा, राइट। अभी ये सरफेस एरिया आप यूज करेंगे पंचिंग फोर्स निकालने के लिए। पंचिंग फोर्स क्या रहेगा, पंचिंग फोर्स विल बी shear strength into surface area, and shear strength का वैल्यू दिया उन्होंने 300 MPa, 300 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, so 300 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, they are asking you in kilonewtons, so fine, so multiply by 1500 करेंगे तो हम लोग को आंसर आ जाएगा न्यूटन्स में, इसको डिवाइड बाय 1000 कर देंगे, so if you just divide this by 1000, so you have 1.5 into 300, that is 450 kilonewtons. So that should be 450 kilonewtons. Correct, this is 450 kilonewtons. So yeah, तो इसमें ये अलग तरीके का शेयरिंग हो रहा है, तो कौन सा सरफेस एरिया में एक अलग तरीके का प्रॉब्लम था, इसलिए मैंने इसको इधर अभी ले लिया। तो ये था, okay, there was option also, fine. So the option is B. I thought anybody could get the right question. So 16th problem is done. We'll come to the 17th problem now. So a rotating steel shaft is supported at both the ends. Okay. So I'll just erase this side. Okay. So rotating steel shaft is supported at the ends. It is subjected to a point load at the center. So there is just a rotating shaft. Okay. Supported at both the ends. So here and here it is supported. So it has some reactions. It has some reactions, and it has some load at the center. Let's say P. And they are asking, the maximum bending stress developed is 100 MPa. They are saying the maximum bending stress because of the center load ये ऐसा रहेगा, bend होगा shaft. Simply supported beam है, loading at the center है, तो maximum bending moment center पे आ जाता है, and maximum bending stress उधर ही आ जाता है. Okay, so we have simply supported beam again. Once again, this is simply supported beam with the point load at the center. Bending moment is maximum at the center, so bending stress is also maximum at the center. Bending stress आपका क्या रहता है? Actually, normal stress रहता है. So sigma max, maximum bending stress is given as 100 MPa, and the entire thing is rotating. ये पूरा चीज ऐसे रोटेट हो रहा है. तो नीचे वाला जब ये चीज क्या रहेगा, टेंशन में रहेगा. जब यही फाइबर ऊपर चला जाएगा, this fiber goes up. This will be in compression. This will be in compression. So नीचे रहेगा तो maximum tensile stress क्या रहेगा, 100 MPa.
ऊपर चला जाएगा तो मैक्सिमम कॉम्प्रेसिव नॉर्मल बेंडिंग स्ट्रेस क्या रहेगा 100 MPa। तो मैक्स और मिन के जो वैल्यूज है, क्योंकि ये शाफ्ट रोटेट हो रहा है, वो इस तरह से है। जब नीचे रहेगा तो टेंसाइल रहता है, मैक्सिमम टेंसाइल मैक्सिमम स्ट्रेस क्या है 100 MPa। ये ऊपर चला गया, कॉम्प्रेसिव हो गया -100 MPa। ये क्यों किया लिखा इस तरह से मैंने, क्योंकि आगे देखोगे तो इन द यील्ड अल्टीमेट करेक्टेड एंड्योरेंस स्ट्रेंथ, ओके करेक्टेड एंड्योरेंस स्ट्रेंथ बोला है, मतलब इधर ये सोडरबर्ग गुडमैन वाला क्राइटेरिया नहीं है ना। endurance strength of the shaft are 300, 500 and 200 MPa. Then the factor of safety for the shaft. Now this is going to be exactly Soderbergh of Goodman. But the question that arises is which one? Which to use here? So can anyone tell me in such a case what we should use? What we should use? It is a completely reverse loading, correct Pritish? So इधर से completely reverse loading होगा ये, क्योंकि that's not the answer to my question by the way, but since you already mentioned it, ये completely reverse loading नीचे tension ऊपर compression, so इधर से हम लोग क्या कर सकते हैं, sigma min का value निकाल सकते हैं, which is nothing but sigma max plus sigma min by 2, and sigma a will be equal to sigma max minus sigma min by 2. दोनों वैल्यूज आ गए, ओके सिग्मा मैक्स प्लस सिग्मा मिन, ये तो 0 हो जाएगा मीन वैल्यू, सिग्मा ए विल बी सिग्मा मैक्स प्लस सिग्मा मिन, 100 माइनस और माइनस 100 will be 200, 200 by 2 will be 100, so 100 MPa is the alternating stress. The question is which criteria to use, Soderbergh criteria or Goodman criteria? Soderbergh criteria बोल रहे हो क्या? Why Soderbergh? Why Soderbergh? Why do you think Soderbergh? Q. If you go to any reference book, for you, I would have recommended if the professors would have recommended to use. Pritish, you're talking about safe phase. Ramesh, you're talking about safe phase. But let's be practical. If you, the moment you, and Samhita even modified Goodman. Modified Goodman such a Goodman. Modified Goodman is the correct answer. But here we are going to use Goodman. Modified Goodman is nothing but Goodman criteria. Okay. Yes, this becomes more conservative. And the moment you become more conservative, you become more costly in terms of materials. So if any reference book in the practical cases, they would have recommended to use Goodman criteria. So by default, you should use Goodman criteria. If it is explicitly mentioned to use Soderbergh, then use Soderbergh. Okay. So ideally, you should always design by Goodman criteria because Goodman criteria is more closer to failure. Okay. कोई भी चीज ना, so conservative design में ये word बहुत dangerous है. Conservative design मतलब कि आप super safe करने जाओगे चीजें. Sigma u consider नहीं. Sigma u is ultimate tensile stress. Yes, correct. Sigma u is ultimate tensile stress. तो जब भी आप कंजर्वेटिव करने की कोशिश करोगे ना, तो आप मटेरियल को ज्यादा यूज करोगे सेव करने में, फैक्टर ऑफ सेफ्टी बढ़ाते हो उसकी वजह से, एंड आपका चीज हेवीली हो जाता है क्योंकि मटेरियल बहुत ज्यादा इंकर हो जाता है, ऑलराइट, एंड कॉस्टली भी हो जाता है. So you don't want to be super safe, you want to be safe. So always use Goodman if nothing is mentioned. Okay. तो इधर आपको Goodman criteria यूज करना है. उसका है 1 upon factor of safety. क्या है इक्वेशन, कैन anyone tell? Sigma A upon sigma endurance, correct endurance strength, sigma M upon sigma ut. इधर और एक चीज नोटिस करोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला. सोडरबर्ग यूज करो, गुडमैन यूज करो, कुछ नहीं फर्क पड़ना है क्योंकि आपका सिग्मा एम जो है ना वो 0 है. ओके, दैट इज व्हाई इट हैज नॉट मेंशन्ड इन द क्वेश्चन कि क्या यूज कर रहे हैं. कोई भी यूज करो भाई, आपको सिग्मा एम 0 है तो सिग्मा यू की आ जाए या सिग्मा वाई आ जाए, क्या फर्क दिखने वाला है? कुछ भी नहीं. ओके, बट जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, आइडियली इन इंडस्ट्री और आइडियली इट शुड ऑलवेज बी प्रेफर
use Goodman first unless and until you want to make it super safe. Okay, so 1 upon factor of safety है, sigma A है मेरा 100, sigma endurance strength क्या है, it is 200 plus sigma M is 0, so factor of safety will be 2. Factor of safety will be 2. See, in this question, even if they have not mentioned Soderbergh or Goodman criteria, it does not matter because your sigma M is equal to 0. Okay, sigma M equal to 0 है तो ये sigma M upon sigma UT आ जाए, sigma M upon sigma YT आ जाए, कुछ भी नहीं फर्क पड़ता. Okay, so this is Goodman's criteria. Okay. सिग्मा YT की जगह आपने सिग्मा UT की जगह YT लिखा रहता है, यील्ड वाला कंडीशन, तो ये सोडरबर्ग हो जाता है. एंड मॉडिफाइड गुडमैन के लिए भी आपको यही यूज करना है इक्वेशन. देयर इज नो सेपरेट इक्वेशन, बट द पॉइंट्स दैट यू गेट दे शुड लाई विद इन द मॉडिफाइड गुडमैन रीजन एंड नॉट आउटसाइड इट. सो वो जो मॉडिफाइड गुडमैन लाइन है ना, वो गुडमैन का ओरिजिनल रीजन को मॉडिफाई कर रहा है, ना कि उसकी इक्वेशंस बदले, क्योंकि दो लाइंस अलग-अलग रहती है. एक तो आपका रहता है यील्ड लाइन और एक रहता है गुडमैन लाइन. यू डिजाइन अकॉर्डिंग टू गुडमैन लाइन कीपिंग इन माइंड दैट यू आर बिलो द यील्डिंग ऑफ द मटेरियल. Alright, so in modified Goodman, you are going to use the same equation. Okay, ये equation कब use करते हैं? When we talk about dynamic design. Okay, dynamic design. And since we have touched this part, एक quickly ना, ये भी हम लोग करते हैं कि ये sigma m mean is mean value. Alternating क्या है? Your endurance strength is actually your alternating stress. Okay. Endurance strength is nothing but the alternating stress. और वो endurance stress को किस तरह से define करते हैं? ऐसा stress जो first crack देता है. The moment you get the first crack, okay, एक crack, पहला crack अगर मिला, that stress is corresponding to endurance strength. Okay, it depends upon the external load that is acting. It depends upon the size, number of cycles, and number of different factors. How to find out a corrected endurance strength? We have a separate equation for that. So we write that equation. That equation is sigma E minus 1. This is minus 1. I'll just write it according to the convention. Corrected endurance strength. It is given by size factor into surface finish factor into reliability factor into anything else. टेम्परेचर फैक्टर करके एक भी आता है, और कुछ आता है क्या? इनटू सिग्मा ई अपॉन kf. Okay, what are these terms? Let's see. Size factor रहता है. This is your size factor less than 1. Surface finish factor less than 1. जो भी less than 1 है वो न्यूमरेटर में, जो भी greater than 1 है वो नीचे है डिनोमिनेटर में. जैसे ये सरफेस फिनिश है. अगर मिरर फिनिश मोड़ा है क्वेश्चन में, if they say mirror finish, that means KSF is 1. If it is other than mirror finish, they will give you the value. Reliability factor, okay, it is 0.85 for 90% reliability. Okay, they will mention the reliability and the value as well. Then you have temperature factor. This generally comes into picture only when the temperature goes beyond 300 degrees Celsius. What is KF? The important one. It is fatigue stress concentration factor. Fatigue stress concentration factor. Okay. KF का वैल्यू कैसे देते हैं हम लोग? 1 plus Q KT minus 1. What is Q? Q is notch sensitivity. So I'll just write here Q is notch sensitivity and KT is theoretical stress concentration factor. KT is theoretical stress concentration factor. Okay.
Q is the non-sensitivity, KF is fatigue stress concentration factor. This is the actual value. So इन सब को मल्टीप्लाई करके आपको सिग्मा करेक्टर एंड्योरेंस स्ट्रेंथ मिलता है, क्योंकि जो टेस्टिंग ये एंड्योरेंस स्ट्रेंथ ये जो है ना वो थियोरेटिकल है। क्यों? क्योंकि ये स्टैंडर्ड स्पेसिफिक कर रहे थे। हमेशा जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस आते हैं या ज्योमेट्रीज आते हैं वो हमेशा आइडियल नहीं रहते, मिरर फिनिश नहीं रहता, डिमेंशंस चेंज रहता है। जैसे आप साइज को बढ़ाते हो तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट मिलने का चांसेस का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। All these factors are taken into consideration when you multiply this. Okay, so ये एक चीज का Soderberg-Goodman criteria. Okay, this concepts are used in case of dynamic or fatigue design or fatigue analysis. All right. So let's see what else we have in the question set. Okay, so let me. If you have any questions about this loading factor, I don't know which loading factor. There is one more. Okay, good. I understood what you're trying to say. There is one more. KL loading factor here. Okay, ये loading factor क्या है? ये मतलब आपके पास जो shaft है या आपके पास जो structure है जो जिसके ऊपर fatigue loads आ रहे हैं, उसके ऊपर जो loads act हो रहे हैं वो gradual load है क्या? Whether it's an impact load, whether it's a random load, what kind of load it is actually having, that factor is taken into account by using KL, that is for loading factor. Okay, so generally ना KT और KL बहुत ही rarely use आते हैं, और बाकी के terms KS, KS, KR और KF they are widely used. So yeah, this is the complete equation. KL is the loading factor, correct? Okay, so which was it? I think this one we have done. Yeah, we'll do 19th problem. We'll do 19th problem. Okay, before proceeding to the 19th problem, so in strength of this, what we did, we diverged attention into fatigue design or machine designing. So there is a very fine line, we can cross this boundary of strength of materials and machine design anytime when solving SOMs, because SOM is actually prerequisite for a machine design problem. तो हो सकता है। तो let's come back to what we learned in SOM. हम लोगों ने क्विकली रिकैप किया था सिंपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन के बारे में, थर्मल स्ट्रेसेस के बारे में, टॉर्शन के बारे में, स्ट्रेन एनर्जी के बारे में. We also talked about deflections and slopes. Bending moment बाकी है and columns बाकी है. These two concepts. So what I will do is I will write the equations. So flexural equation क्या है bending के लिए? M/I sigma b by y equal to E by R. ये आपका फ्लेक्शनल इक्वेशन है. M is the maximum bending moment. Remember this. M is always the maximum bending moment. तो इधर आप जब M की वैल्यू डालोगे, it has to be a maximum bending moment value. Otherwise, don't work. I will be moment of inertia. Mi. Sigma is the bending stress. Y is the distance of the fiber from the neutral axis. Distance of the layer or fiber on which you want to calculate the value of sigma b from neutral axis. E is the Young's modulus, we all know, and this is the radius of deflection or radius of curvature. ये जो इक्वेशन है ना फ्लेक्सुरल इक्वेशन, ये प्योर बेंडिंग में यूज होता है. प्योर बेंडिंग मतलब ऐसा बेंडिंग जिधर सिर्फ बेंडिंग मूवमेंट आती है, शेयर फोर्स नहीं आती. ओके, ऐसी बेंडिंग मूवमेंट जो सिर्फ ऐसा लोकेशन और ऐसा एनालिसिस जिधर सिर्फ शियर स्ट्रेसेस जीरो है और बेंडिंग मोमेंट आएगी, वही लोकेशन पे हम लोग की इक्वेशन यूज कर सकते हैं. इसलिए इसको बोलते हैं
in case of pure bending, when I say pure bending, shear force 0 होनी चाहिए. Practical cases में shear force कब 0 होगी? Can anyone tell me in the comment box quickly? ऐसा कभी होगा क्या कि shear force 0 होगी? क्योंकि सबके पास तो weight है. सबके पास weight है मतलब सबके पास नीचे एक्ट करने वाला force है and we have shear force there. तो कब shear force 0 होगी या कभी होगी भी नहीं? Anyone tell? Whether it's possible or not, whether shear force equation use कर पाओगे क्या practical cases में? ये बोला yes or no, बस इतना बोलो. So drink a lot of water. Swami says no. Anyone else? Okay, so others are, they don't know. Yes, we can use, Ramiz, let me correct you here. Yeah, at maximum bending moment, Savita. But my question was whether in practical cases, in practical scenarios, in practical world, can we use this equation? Because that if you want to use this equation, the primary condition is shear force should be equal to 0 or pure bending moment. And that means we can use it, okay, in all practical cases. Because can you tell me when does your bending moment become 0 maximum? When does your bending moment become maximum? If you remember, your bending moment becomes maximum when shear stress is 0. Okay, so at a particular section, if shear force is 0, then bending moment is max. Okay, तो आपने जब shear force diagram बनाया था, ये SFD आपने बनाया, okay, SFD पकड़ इस तरह से आया, ऊपर गया, सीधा नीचे, इस तरह से आया, फिर से ऊपर गया, पकड़ इस तरह का आपका SFD बना है. Shear force diagram क्या indicate करता है? Variation of shear force along the length. ये जो वेरिएशन है ना shear force SFD में, ओके, ये जो पॉइंट्स है, इधर shear force is 0 है, ये तो ends में है, ये points are the probable points where your bending moments can be maximum. Okay, so when shear force is 0, bending moment is maximum, so you can use it in all practical cases here, right? So इसको हम लोग को इस तरह से भी लिखते हैं, m upon z is equal to sigma, where z can be written as I by y. This z is known as section modulus. ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. सेक्शन मॉड्यूलस क्या इंडिकेट करता है? वो पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन का स्ट्रेंथ इंडिकेट करता है. अगर आपको स्ट्रेंथ्स कंपेयर करने हैं तो आपको सेक्शन मॉड्यूलस यूज करना पड़ेगा. तो सेक्शन मॉड्यूलस एक्चुअली गिव्स यू the idea of the strength of a particular cross section. So compare the strengths, okay, in case of section modulus when you talk about bending moment. Okay. So this is the equation bending moment that we use frequently. Then columns में क्या करते हैं? Before going to columns, since we talked about shear force and bending moment diagram, so shear force और bending moment के लिए हम लोगों ने एक टेबल बनाया था. Okay, shear force का variation किस तरह से रहेगा कैसे? So fine, we'll do that. But let's talk about columns. Columns में क्या है? Columns is nothing but a structural member, एक structural member है, जिसके ऊपर compressive forces आ रहे हैं. जिसके ऊपर कॉम्प्रेसिव फोर्सेस आ रहे हैं. स्ट्रक्चर है मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 है एंड ये इस तरह से बेंड हो रहा है और ये अल्टीमेटली फेल होगा. ये बेंडिंग को बोलते हैं बकलिंग. तो कॉलम्स बकल होते हैं एंड हम लोग को सिर्फ लॉन्ग कॉलम्स है इसमें. सो वी ओनली हैव लॉन्ग कॉलम्स.
So लॉन्ग क्रिटिकल लोड, कौन से क्रिटिकल लोड के लिए ये कॉलम बकल होना चालू होगा या बकलिंग कब से चालू होगा, उसके लिए फॉर्मूला है यूलर्स फॉर्मूला, पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम अपॉन एल ई स्क्वायर. एल इज द इफेक्टिव लेंथ स्क्वायर. इफेक्टिव लेंथ डिपेंड्स अपॉन द सपोर्ट्स, टाइप ऑफ सपोर्ट्स. उसका डेफिनेशन क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive bending moment, zero bending moment points. LE is nothing but the distance between two consecutive zero bending moment points. And minimum E is the Young's modulus. Critical load is at which the buckling starts. Alright. So इसको ये equation था. And आपके पास conditions इस तरह से LE will be equal to L when you have this case, when both of them are hinged. So L will be equal to L. L will be equal to L by 2 when both the sides are fixed. Your L will be equal to L by root 2 when one side is fixed and the other is hinged. And your L will be equal to 2L where one side is fixed and the other end is free. When the other end is free. ये cases थे. ये कब यूज कर सकते हैं? Only when you have long columns. Only when you have long columns. Okay, long columns का criteria क्या है? कि your slenderness ratio lambda should be greater than lambda critical. And how to find out the slenderness ratio? What is the equation? Anyone tell? Just drop the answer in the comment box. Yeah, come on. Give me the answer for the slenderness ratio. What is that ratio? I want one of you guys to answer this question. Okay, since nobody answered, let me answer this. So how will you write slenderness ratio? Okay, so no answer. I hope I'm live. Yeah, I'm live and it's connected. So come on, answer. Let me write the answers. Okay. So it will be lambda will be LE upon K. Okay, I have the answer. I wanted the equation for slenderness ratio. Lambda is the slenderness ratio. तो इस इक्वेशन को हम लोगों ने थोड़ा मॉडिफाई भी किया था. किस तरह से किया था? लेट्स सी. PC will be equal to pi square EI. How I can written as A K square, cross section area into radius of gyration square upon LE square. So I'll just write it this way: PC upon A will be written as pi square E upon LE upon K the whole square. This PC upon A, this is critical force upon cross section area, that is critical stress, is pi square E, and this is nothing but LE upon K, randomness ratio. No, slenderness ratio. Sorry. Effective length upon least radius of gyration. Correct. The word least is very important. So K minimum, very good. So this is the slenderness ratio. So ये lambda should be greater than the lambda critical to have to use Euler's equation for bending. Okay, just a quick recap of columns. Okay,
let's take question number 21. Okay, let's take question number 21. So in question number 21, they are saying a simply supported beam of length 3L is subjected to the loading shown in the figure. It is given that P will be equal to 1 Newton, L will be equal to 1 meter. Young's modulus value is given. The cross section is a square with a dimension of 10 mm into 10 mm. The bending stress at the point A located at the top surface of the beam. So they are asking you, okay, look at the top surface of the beam at a distance of 1.5 L from the left end. So point A आपको दिया है और उन्होंने पूछा है कि उसके वो point A के ऊपर सबसे टॉप सरफेस के ऊपर उसके कितना बेंडिंग स्ट्रेस है. ओके, सो लेट्स ड्रॉ दिस डायग्राम. And his lengths are L, 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 and here is point A at a distance of 1.5 L. It is at the midpoint, so it doesn't matter if you take one right or left. और उन्हें पूछा है ये इसका क्रॉस सेक्शन स्क्वायर है, ठीक है. ये स्क्वायर क्रॉस सेक्शन के ऊपर they are asking you here, this is point A, at the top surface A at this point, what is the bending stress? इधर उन्होंने पूछा कि बेंडिंग स्ट्रेस कितना है. लेट्स सी. तो बेंडिंग स्ट्रेस निकालने के लिए मुझे पता है, तो आपको तो क्रॉस सेक्शन दिया है, स्क्वायर है, तो you can find out I, you can find out Y. So okay, Satish is already with an answer 0. Wow, let's solve this. तो चलेगा, आंसर 0 है. वेरी गुड. लेट मी सॉल्व. So all the values are given. So E का value है आपके पास है, P का value है, everything is there. So let's try to find out what is the bending moment. Bending moment means bending moment का value निकालना. Bending moment का आपको value निकालना तो पहले आपको reactions निकालने पड़ेंगे. तो इसको पकड़ो, मैं बोलता हूँ A और इसको बोलता हूँ B. Okay. So A already taken है, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको B, C, D and E. तो reaction at E निकालते हैं. So summation of moment about B करेंगे equal to 0. तो E का value reaction मिलेगा. So let's assume reaction will acting in the upward sense, RE. So we'll assume anti-clockwise is positive. So RE into 3L. So about moment B is about value. So RE into 3L. Okay. Minus P into 2L. ये clockwise है, तो ये minus 2P into L. This is anti-clockwise, so this is plus P into L equal to 0. So minus 2L plus PL. So this will be minus PL. So minus PL इधर चला जाएगा. RE into 3L. So this will be minus PL minus इधर plus हो जाएगा. L and L. So RE will be equal to P by 3. So the reaction here is P by 3. E क्यों निकाल रहा हूँ मैं? क्योंकि मुझे इधर bending moment चाहिए at point A. Okay. So bending moment. अभी आपको reaction मिला. एक ही reaction काफी है. दोनों reaction निकालने की जरूरत नहीं. एक reaction से अपना काम होने वाला है. So let's see क्या होता है आगे. तो R अभी हम लोग क्या करेंगे? Bending moment at A निकालेंगे. कैसे निकालेंगे? ये वाला मोमेंट देता है, ये वाला मोमेंट देता है. इन दोनों का नेट मोमेंट A के ऊपर एक्ट करता है. So let's see
RE into this length, that is 1.5. RE is P by 3. RE, this length will be 1.5 L into 1.5 L. This is P minus P. This was sagging. Okay, ये hogging है तो minus आ जाएगा. Minus P into L. Okay, so I'm getting something wrong here. Let me check. Reactions सही निकाल रहे हैं मैंने. P by 3. So reactions आपके पास P by 3 आया है. So P by 3 into distance is 1.5. I think it's L. So it's a bit concept. It's not going to matter. Yeah, bending moment is 0, but am I getting 0? What is the reaction? Okay, sorry. It's not about that. I thought this as L. So this is actually L by 2. I imagine this as L. This is L by 2. So yeah, this is L by 2. So ये 2 हो जाएगा. So PL by 2 minus PL by 2 will be 0. Yes. So bending moment. So this distance is not L. The entire distance is L. इधर से इधर distance L है. A से इसका distance L by 2 है. तो ये L by 2 आ जाएगा. So I just got confused here. So bending moment at A is 0. अगर bending moment है ही नहीं तो bending stress तो 0 ही होगा. So yes, Satish, yeah, Shai, I got it now. Satish and Ramesh, all of you guys are correct. So bending moment at A is 0, implying sigma at A is also equal to 0. So इसमें हम लोगों ने bending moment diagram नहीं बनाई क्योंकि ये simple था. But bending moment diagram के जैसे analysis करते हैं वैसे analysis किए और इसके पहले हम लोगों ने equilibrium conditions use किए. Okay, so yes, the answer here is 0. Let's take another sum. Let's take problem number 19. Let's take problem number 19. Problem number 19 क्या बोल रहा है? A bolt of major diameter 12 mm is subjected to a clamp. Therefore, is required to clamp 2 steel plates. There are 2 steel plates. So 12 mm bolt is subjected to a 12 mm का bolt है इसके अंदर जा रहा है. Cross sectional area of the threaded portion of the bolt is 84.3 mm. There is some threaded portion. तो ये जो threaded portion of the bolt है, इसका area उन्होंने दिया cross sectional area as 84.3 mm square. Okay, and the length of the threaded portion of the grip is 30 mm. And the unthreaded portion of the grip is okay. So they've given you the lengths here. ये threaded portion का length है 30 mm और ये unthreaded portion का length है 8 mm. They are asking you what is the effective stiffness in meganewton per meter of the bolt in the clamp zone. Okay. तो ये जो है ना ये bolt का effective stiffness पूछा है meganewton per, there is that meganewton per meter. Fine. अब इसका stiffness निकालना है.
एक इंपॉर्टेंट चीज इधर ना एक ध्यान रखना है आपको कि if you are using such things, then if such kind of question comes, we have to divide this bolt into two kinds of bolts in series. एक threaded वाला bolt और एक unthreaded वाला bolt. ऐसा क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि इन दोनों की जो stiffnesses है वो अलग-अलग रहेंगी क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरियाज अलग-अलग है. Again I repeat, अगर ऐसा सम आया similar kind of problem, you have to divide this bolt into two bolts. One bolt imagine करना है कि threaded portion वाला stiffness देता है, दूसरा bolt unthreaded वाला stiffness देता है और दोनों bolt series में है. Both the bolts are in series. I hope this is clear. So both the bolts are in series. So आपको क्या करना है? इस तरह से इसको मैं equivalent diagram बनाता हूँ. इसका bolt का कैसा रहेगा? एक stiffness ऐसा आ जाएगा K1 K2 इस तरह से. पहला मुझे K1 निकालना है. K1 अगर मुझे निकालना है, it will be A1 E1 L1. ये हम ये इक्वेशन हम लोगों ने स्टडी किया था जस्ट बिफोर द ब्रेक इन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. ओके, सो I wrote stiffness as K is equal to A by L. तो ये वाला इक्वेशन आ जाएगा. अभी ये कौन सा स्टिफनेस है? दिस स्टिफनेस फॉर द थ्रेडेड पोर्शन. ये थ्रेडेड पोर्शन का स्टिफनेस है. सो A1 into A1 E1. सो A1 का वैल्यू दिया है. थ्रेडेड पोर्शन का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है? 84.3 मिलीमीटर स्क्वायर. आई थिंक E का वैल्यू इज गिवन एज 200 GPa. I'll keep everything in Newton per millimeter square. Okay, so 200 GPa is 2 into 10 raised to 5 Newton per millimeter square. This is millimeter square. And length of the threaded portion is given as 30 mm. इसका वैल्यू आपको पहले निकालना है. ये K1 हो गया for threaded portion. Similarly हम लोग K2 निकालते हैं. K2 will be obviously A2 E2 upon L2. अभी इधर कौन सा एरिया आएगा? That is the catch. What area we are going to use here? Here in this we are going to use the major diameter of the bolt. They have given the bolt is of major diameter 12 mm because this is unthreaded. ये region threaded नहीं है. Okay, so आपको पता है bolt में threaded region होता है, unthreaded region होता है. तो unthreaded region वाला जो है उसके लिए आपको एरिया निकालना है. That is pi by 4 d square. Okay, d will be 12 square. This is millimeters. E2 will remain unchanged. Same material. Here L2 will be the length of the unthreaded portion, that is 8. Now your job is to find out this K1 and K2 and what is the value of K1 and K2. Tell me in the comment. So I want you guys to answer this K1 and K2. निकालो मुझे वो दीजिए please. Okay, the moment you get this K1 and K2, springs are in parallel. Sorry, springs are in series. What is the equation for springs in series? Effective stiffness के लिए 1 upon K will be 1 upon K1 plus 1 upon K2. Here, ये है springs in series. The springs in series. Now using this K1 and K2 substitute करो और K का वैल्यू आप मुझे बोलो. This K का वैल्यू whatever using this units you are going to get in Newton per millimeter square. But be careful. The unit that they want is meganewton into millimeter square. Okay. So basically this is nothing but 10 raised to 6 Newton per meter square. I guess the answer will turn out to be the same value. Okay, please tell me the value of K here. So ये न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा. सभी मैंने बोला है ये क्या आ जाएगा? न्यूटन पर मिलीमीटर यूनिट्स में आ जाएगा. जो भी वैल्यू रहेगा ये भी न्यूटन पर मिलीमीटर के टर्म्स में आ जाएगा. Please tell me the values here.
So I'm expecting an answer from you guys. So I hope you guys answer. I want you guys to solve so that it becomes a bit easier. .38. Anyone else? I guess that answer might be incorrect. Any other values? Just wait for a moment. So major diameter area is greater than threaded diameter area. So we have to add or subtract major. ये कुछ नहीं 12 mm डायमीटर ले लो एरिया से तो निकल जाएगा और उनने इधर जो दिया है वो डायरेक्टली एरिया दिया है डायमीटर का. So you don't have to worry about anything. You don't have to add or subtract anything. Directly use this area. ये एरिया तो पूरा एरिया ही रहेगा ना. उसमें कुछ गायब भी नहीं है पोर्शन. ये कम रहता है थ्रेडेड पोर्शन कंपेयर्ड टू दिस. So you nothing. You don't have to add or subtract anything. I think the answer will turn out to be 468, 467, 468, or 469. Okay. So I just wait for a minute. Let's see if you guys can come up with that answer. Otherwise, we'll proceed ahead. So bolt design है ये. Okay, bolt में हम लोगों ने 3 cases study किए थे machine design में. When the load eccentric is along the axis के लिए study किया था. एक second case था when the bolt when the eccentric load is perpendicular to the axis, and the third case was it was perpendicular to the axis eccentric load, but along the same plane in which the bolts are lying. So 3 cases हम लोगों ने study किए थे for bolt design. ये थोड़े अलग किस्म की problems है इसलिए मैंने इसको लिया है इधर. Okay, Dhwanil got answer is 468. Yes, the answer is 468 meganewton meter square. Meganewton meter square. Okay, so let's go ahead to the next problem. Now let's talk about problem number 20. Okay, problem number 20 करते हैं. Okay, so in problem number 20, they have said the flow stress in MPa of the material is given by sigma is 500 epsilon into 0.1 is to 0.1, where epsilon is the true strain. It's in meganewton per meter, right? Yeah, yes. Yeah, it's meganewton per meter. Oh, sorry. I written meter square. It's meganewton per meter. We're not talking about stress. We want the stiffness. Correct. It's meganewton meter. No, where was I here? So where epsilon is the strain, the Young's modulus of elasticity of the material is 200 GPa. Okay, E ka value is given. The block of thickness 100 mm made up of the material is compressed to 95 mm thickness. Okay. And then the load is removed. The final dimensions of the block is. So this is kind of a bit tricky question, not straightforward, not tricky. That's a new thing. So we know true strain is given by ln of 100 upon 95. Okay, 100 is the original dimension, 95 is the final dimension after it has been compressed. All right. Then इधर से आपको ln का वैल्यू मिलेगा 0.0529. ये true strain आ गया. Now they are asking you what is the final dimension of the block.
the final dimension of the block won't be 95. It will be slightly more than 95. Okay. We are going to use this true strain to find out what will be the slight more along, the bounce back elongation. It's not a bounce back elongation after you apply the normal engineering equation. So we'll come to that. Let's see that. This was a typical problem. Sometimes such problems won't. I don't expect these problems to come. But since it was asked, we will solve this. I'll show you the technique of how to do this. So yeah, so they are given through sigma flow stress दिया है epsilon t और इधर से आपको epsilon t का वैल्यू मिला. Now substitute this here. So you get sigma as 500 into 0.05129 raised to 0.1. The moment you solve this, you get true stress value as 371.5 MPa. So the thing is compressed. Okay. The entire block is compressed. So let's take this example of this bottle. So the entire block is compressed to 95 mm. And there is a slight elongation that is going to happen because compressed हुआ है ना, तो वो उसको original shape and size में आने की कोशिश करेगा. और ये जो compress किया 95 mm जो आपको length बोली है ना, वो engineering stress strain curve पकड़ के बोली है, मतलब area constant पकड़ा है. Okay, area constant पकड़ा है. Actually true strain में area constant नहीं रहता, area change होते जाता है. वो relation stress में हम लोगों ने incorporate किया. तो अभी क्या होता है? Ideally, whatever value that is given in compression now, whatever values that we have given, whatever values that you get by using engineering stress strain curve will be slightly lesser. So उसमें कुछ extra elongation हो जाता है. जैसे कोई भी चीज for example bounce back elongation क्या होता है? Let's say आपने इधर ruler पकड़ा ऐसा, and the moment you just give it a flick, it starts vibrating. Okay, and after some time it comes to rest. कि जो bounce पीछे हो जाता है ना, return reverse trajectory नीचे गया अभी उसको खींच के ऊपर लेके आता है. जो springing action है वो materials के केस में होता है. जो आपने compress किया तो थोड़ा spring back होने की कोशिश करता है. So you need to find out the spring back elongation. तो अभी compress हुआ है, पर ये जो spring effect आता है ना, वो compression को कहीं 95 mm का barrier है. इसको थोड़ा और खींच के आगे लेके आ जाएगा, 95 से थोड़ा बड़ा करेगा, 95 प्लस समथिंग करेगा, और वो प्लस समथिंग निकाल के हम लोग को वैल्यू डालना है. सो इसलिए थोड़ा सा इधर ध्यान रखो. ये निकला. देन we all know delta L is actually given by sigma L upon T. ये वैल्यू हम लोगों ने लास्ट टाइम इक्वेशन स्टडी किया. ओके, so sigma L upon E. Sigma का value we know 371. L का value is given as L का value will be given as L का value is 95. Okay, so sigma का value is 371.5 95 and E is given as 200 GPa. So 200 into 10 raised to 5 millimeters. This value you will get as 0.185 millimeters. ये आपको 0.185 millimeters का वैल्यू आ जाएगा. That will be delta L. ये है आपका spring back elongation. This is your spring back elongation. Okay, this value will be additional to 95. So आपको 95 में plus 0.185 करना है. तो actual उसका dimension क्या रहेगा? It is 95.185 millimeters. ये value रहेगा. Okay, इसका 95 वही उन्होंने पूछा है, if I am correct. They are asking you the final dimension of the block in mm. So 95 plus 0.185, 95.185 mm. ये values मैंने solve किए थे, इसलिए हमने directly लिखे हैं. आपको solve करने के बाद भी यही values मिलेंगी. Okay.
सो ट्रू स्ट्रेस सिस्टम के बाद हमने ऑलरेडी दो प्रॉब्लम्स किए हैं. हम लोगों ने बोल्ट डिजाइन की टिपिकल प्रॉब्लम्स देखे, हम लोगों ने फटीग डिजाइन का एक प्रॉब्लम देखा. हम लोग अभी आगे मूव होते हैं गियर के डिजाइन पे. ओके, तो आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 23. ओके, क्वेश्चन नंबर 23 एक बड़ा क्वेश्चन है. तो ये मे भी आपने सॉल्व किया था ऑलरेडी, और जिसे रिकैप के लिए हम लोग फिर से एक बार उसको रीड करते हैं. So the overall gear ratio in the two-stage reduction gearbox. So it's a two-stage reduction gearbox with all spur gears. They're all spur gears. Is 12. So the total reduction gear ratio is 12. The input and the output shaft of the gearbox are pulling gear. The counter shaft, which is the intermediate shaft, is parallel to the input and the output shafts. Okay. And as a gear Z2 teeth and a pinion Z3 15 teeth to mesh with the pinion of 16 teeth on the input shaft and gear on the output shaft respectively. It was decided to use the gear ratio of 4 with 3 modules in the first stage and module 4 in the second stage. So they have given the modules of the first and the second stage and the gear ratio of the first stage. Okay, so let's proceed. Hope you guys have written this. So it's a two-stage reduction. एक दो तीन हम लोग को ये करने हैं इसके अंदर फॉर्मूलास. ये है आपका आउटपुट शाफ्ट, ये इंटरमीडिएट शाफ्ट है, ये आपका इनपुट शाफ्ट है. ओके, नाउ इस तरह से आएगा. The module is, you decide to use a gear ratio for module 3. The 3 module in the first stage. So the module here M1 is 3 and module in the second stage M2 will be 4. And gear ratio here is 4, so here it will be 3 because total is 12 and total will be multiplication of gear ratios in each stage. Okay. Now they have given Z3 15 teeth, so ये जो है Z3 इसका 15 teeth है. It meshes with the pinion, ये जो है Z1 इसका 16 teeth है. And they ask you Z2 and Z4. So it's simple. Z2, this will be Z2, this will be Z4. So your gear ratio is actually given by Z2 upon Z1 in the first stage I1. Okay. So Z2 by Z1, this I will be written as 4. Z2 का वैल्यू हम लोग को निकालना है. Z1 का वैल्यू 16 है, तो we know Z2 as 64. Okay. So there is only one option which has first value as 64, that is option number A. So the other value will be 45. Okay. अगर आपको इन दोनों के बीच का सेंटर डिस्टेंस निकालना है तो आपको मॉड्यूल यूज करना पड़ेगा. So center distance between the two gears will be radius of gear 1 plus radius of gear 2. इन दोनों के बीच का center distance आएगा. Center distance between 1 and 2. How to find out radius? It is module M1 Z1 by 2 plus module M1 Z2 by 2. That is center distance between 1 and 2. We know module is given as 3. So ये जो equation है ना, ये हम लोग को radius देता है. Okay. And into Z1, Z1 का value will be 16 by 2. This will be 3. Z2 का value will be 64 by 2. So इधर से आपको center distance भी आ जाएंगे. So here the assumption is we are going to use only spur gears, and in your syllabus you only have spur gears. So since we are talking about gears, we talked about module. Module is nothing but given as module is actually given as
the bit circle diameter upon Z, number of teeth. Okay, and module is used for the design of gears. जब भी हम लोग बोलते हैं gear को design कर तो हम लोग module के बारे में बात करेंगे. Which function, which theorem we are going to use here? So there are, which test criteria we are going to use? Can anyone tell which is the most commonly used design criteria for gears? What is the most commonly used design criteria for gears? I'm expecting some answer. So gears में famous equations हम लोग use करते हैं. I think you should look up this instead of me answering. So strength के लिए, okay, tangential strength or Fs is given as sigma b. Lewis's equation बोलते हैं इसको, correct? Lewis's equation. So Lewis's equation is sigma b into S, Lewis's form factor, multiplied by module, multiplied by क्या रहते हैं? और face width, stress on pinion and gear, please, into face width. ये equation Lewis's equation हम लोग use करते हैं. और ये कौन सा criteria assume करता है failure के लिए? Bending. Okay, assume करता है कि कुछ radial stress आता ही नहीं है. पर ऐसा नहीं होता. There is also some radial stress कभी, right? So radial stress है, but that is not the failure criteria. The assumption is that the gear tooth on which the tangential force is acting will actually fail because of bending, because it is fitted as a cantilever with a point fluid at the end. That each gear with ये assumption है Lewis's का. Okay, so ये है FT और tangential strength और strength of a particular gear. Wear की वजह से भी failure होते हैं. ये purely criteria था design के लिए, bending. So spur gears are designed by using this, and they have the highest efficiency. If you design by this, you also check for wear. So wear का formula क्या? Can anyone tell me? What is the formula for wear? You can write in the comment section the way you want it. Okay. I'll just be away for a moment to take my notes. I'll be back here. So, any answers? Yeah, B, Q, K into dP, which is absolutely correct. It is B into Q, okay, into K into pitch circle diameter. B is the width, Q will be what? Okay, Q will be 2I plus or minus 1, where I is nothing but my reduction ratio. प्लस वैल्यू का प्लस हम लोग इस्तेमाल कब करेंगे? जब हम एक्सटर्नल गियरिंग के बारे में यूज कर बात करते हैं, और हमेशा एक्सटर्नल गियरिंग ही है आपको, तो हमेशा प्लस यूज करेंगे. के का फॉर्मूला क्या है? ओके, इट इज सिग्मा c स्क्वायर 1 upon e1 plus 1 upon e2 upon 1.4. ये है फॉर्मूला फॉर के. Just let me check once. Okay. Sigma c square sine of phi. Forward sine of phi. So 1 upon e1 plus 1 upon e2 upon 1.4. So sigma c is the compressive strength, phi is the pressure angle that is defined for a particular gear, E1, E2 a Young's modulus for pinion and gear, and 1.4. Okay, so here FW हो गया. Again, when we talk about gears, okay, we also talk about two forces. Spur gears में दो ही forces रहते हैं, tangential force and radial force. Tangential force is given as net force into cos of phi. What is cos phi? Phi is nothing but my pressure angle.
Fr is F into sine of phi, and total F is given as Ft square plus Fr square. Ft square plus Fr square. Okay, ये आपका net force हो जाता है. This is only in case of spur gears. In case of helical gear, there is one more force that comes into picture, known as axial force. उसका value है F into tan of beta. Ft into tan of beta, where beta is the helix side. This only comes into picture if you are using helical gears. बाकी किसी के लिए नहीं. Okay. पावर किससे प्रोड्यूस होती है? गियर्स जो पावर ट्रांसमिट करते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ टेंजेंशियल. सो व्हेन यू टॉक अबाउट पावर इन केस ऑफ गियर्स, it is Ft component, not Fr or F component, which is responsible for power transmission. Ft into R or dP by 2. That is responsible for power. Okay. So if generally when you talk about gears, we have to always design the pinion. Okay. So pinion को हमेशा डिजाइन करते हैं क्योंकि pinion हमेशा weak रहता है. Alright. So these were Lewis's form factor, Weir theory, Weir equation, Lewis's equation, Modius definition, force analysis, and power. These are the important equations for in case of gears. Let me see whether we have a problem here. I think so. We have a problem. No, we have a problem. Gears. This was the only problem. Okay, spur gears are very simple. Let me check whether we have some other thing that needs to be recapped in case of gears. Yeah, I guess that's it. Yeah, when you talk about dynamic loads, in case of spur gears, we have Lewis's equation. We have Barth's velocity factor also. So total load, ये क्या रहता है ना, Ft, Fr या Fs, जो Lewis's equation देता है वो Fs देता है, static load देता है, static strain देता है. But because of some elastic action of the teeth due to some surface finish, there are some additional stresses that gets developed in the gear, and those are known as dynamic loads. So your total stress, your total force actually, stress, it's static plus the dynamic load. Okay, and that total value is given by Fs into Cv. Cv is nothing but Barth's velocity factor. This factor incorporates, this value is more than 1. Cv is more than 1. This factor will incorporate inside itself the values of the effect of dynamic action of tooth. Okay, so आपको total force देता है, that is static force plus the dynamic load that will be coming on the gears. This is kind of a crude way, but mostly आपको gate में CV का value सीधा दिया जाएगा. The most accurate way to find out the dynamic load by using Buckingham's equation, which is not there in gate, but it's there in your regular curriculum. You can use Buckingham's equation. Okay, so yeah, so Barth's velocity factor, एक था CV, F static into CV का value will more than 1 will give you the total force that is acting on the gear tooth. So yeah, so let's proceed ahead. Question number 24. Okay. In question number 24, we have a disc clutch is required to transmit a 5 kilowatt at 2000 RPM. The disc has a friction lining with coefficient of friction equal to 0.25.
Yes, Savita. Flow stress is true stress. Flow stress is true stress. They give it different terminologies, but yes, it's a true stress. So a disk clutch is required to transmit 5 kilowatt at 2000 RPM. The disk has friction lining with coefficient of friction of 0.25. Bore radius of friction lining is equal to 25 mm. Assuming uniform contact pressure of 1 MPa, the value of outside radius is radius of the friction lining. तो उन्होंने ये clutch का problem है. We all know clutch is used to transmit intermittent power to us. A clutch may we have two theories. We have maximum pressure theory and we have uniform wear theory. So generally जब आपका clutch नया होता है तो हम लोग maximum pressure theory use करते हैं. So when the clutch is new. And when the clutch becomes old, we use uniform wear theory. And almost 90% of the clutch's lifetime is operated under this theory, uniform wear theory. According to this theory, PR will be equal to a constant, and here in maximum pressure theory, pressure itself is a constant. Okay. So PR equal to C is actually a constant, the product of that. उन्होंने बोला है इस केस में a disk clutch is required to transmit 5 kilowatt at 2000 RPM. So power is given as 5 kilowatt. So I'll write this as 5000 watts. And RPM is given. So I'll write this as 2 pi n, that is 2000, 2 pi n t. So here I'll get torque in Newton meters. Okay. So I want you guys to calculate this value, torque in Newton meters. The disk has a friction lining with the coefficient of friction to be equal to 0.25. So उन्होंने बोला है mu का जो value है that is given as 0.25. तो t का value मुझे निकालो आप and you drop that value in the comment section. I don't have the values with me, so I'm expecting that you guys will tell me what is t का value. Come on. The bore radius of friction lining is equal to 25 mm. Bore radius के बारे में बात की है, मतलब उन्होंने inner diameter के बारे में बात की है. तो they have said your RI is 25 mm. Assume uniform contact pressure of 1 MPa. So they are asking you to use maximum pressure theory. Okay. So uniform contact pressure is 1 MPa. And the value of the outside radius of the friction line. Okay, so let's solve this. Torque का value मिलेगा. अभी तक किसी ने torque का value नहीं निकाला है? मुझे क्या करना पड़ेगा? Okay, thank you, Ravis. 23.87 Newton. Okay. T will be 23.87 Newton meter, right? So I'll write 10 raised to 3 Newton millimeter. 23.87, 10 raised to 3 Newton millimeter. Once I know this torque, I'll write some equation. Maximum torque that can be transmitted using maximum uniform pressure. Sorry, this is not maximum. This is uniform pressure. Uniform pressure theory. Maximum torque that can be transmitted is given by mu axial force because of spring into Rm. What is this Rm actually given as? 2 by 3 outer cube radius minus inner radius cube upon outer radius square minus inner radius square. Okay. This equation we are going to use. W कैसे निकालेंगे? It is P into pi outer square minus inner square. So this is the area. Pressure into area is going to give me the axial force exerted by the spring. So I'm going to substitute these equations here. So I know
T mu W carburetor has P into pi RO square minus RI square. Okay, the series this part. This values are known to us into Rm, that is 2 by 3 Rm cube minus Ri cube Ro square minus Ri square. Okay, अब देखो तो ये और ये तो कैंसिल हो जाता है. Okay, what remains is only this. T will be equal to mu P pi into 2 by 3 Ro cube minus Ri cube. We know this value as mu as 0.25, P as 1. I think it's given as 1 MPa. So 1 Newton per millimeter square. Pi is a constant, 2 by 3 is a constant. Ri का value हम लोग को पता है, it is 25 mm. Torque का value will be found out as 23.87 into 10 raised to 3 Newton millimeter. The only unknown that we have here is Ro. Can you please tell me what is the value of Ro after evaluating? Everything is known except Ro. I'm just waiting for your answer, please. In case of uniform wear theory, same equation आ जाएगा. Mu W Rm, but Rm इधर क्या रहेगा? Ri plus Ro by 2. इतना ही difference है. Okay, 39.41, which is correct A. You're right, Nisha. It is A. 39.44. Okay, I think we'll proceed to the next one. तो हम लोग 27th वाला प्रॉब्लम करेंगे. 27th वाला नहीं करेंगे, हम लोग 29th करते हैं. Then we'll come to 27th. Let's take some. Oh no, Karnam, shit. 247 is incorrect. It's 39.41. Okay. Message got retracted. That's okay. Okay. Sorry. So question number 30 करते हैं पहले, उसके बाद वो करते हैं. Question number 30 करते हैं. So a self-aligning ball bearing has a dynamic load carrying capacity C10 for 10 raised to 6 revolution of 35 kilonewtons. And if the equivalent radial load on the bearing is 45, the expected life in million in 10 raised to 6 will have. Okay. So this is self-aligning ball bearing. Okay. What is the equation? So what is the equation? Take my right chalk here. Life in million revolution is actually dynamic load carrying capacity upon
equivalent load raised to 1 by K. Now the question says the self-aligning ball bearing. So whenever you have ball bearing, K ka value will always be 3. Other than ball bearing, K ka value will be 10 by 3. So we're talking about here bearings. Okay. So another gears के बाद bearings is another important chapter. तो उसमें ये एक formula आ जाता है जो कि important है. C is dynamic load carrying capacity. P is the equivalent load. P का formula क्या है? Let's write once here. XV FR plus Y times of FA. Okay. Into service factor रहता है, into temperature factor रहता है, तो that's okay. You can write for the simplicity up to here. V is the race rotation factor. इसका value रहता है 1 when inner race is rotating, and by default inner race is rotate होता है. Unless and until specified, V will be 1.2 if outer race rotates. So the entire bearing has inner race, outer race, and bearings, ball bearings or roller bearings, rollers inside, right? So उन्होंने बोली equivalent load है. This equivalent load can be either a radial load according to definition, purely radial, or it can be a purely axial load. दोनों में से एक होगा. Okay, and they have said it is having 35 kilonewtons. So this value is 35 kilonewtons. Alright, and equivalent radial load on the bearing. So P ka value is directly given as 45, and they are asking you the expected life in 10 raised to 6 revolution. When they say 10 raised to 6 revolution, they are trying to tell you you want to calculate the life in million revolution. This formula itself gives you life in million revolutions. You don't have to worry about that. So L MR in million revolutions would be 35 upon 45 1 upon 3. So this comes out to be 7 by 9 1 by 3. Can somebody tell me the answer for this? I will still have participants, so people have not run off because it's late now. So LMR इसका 7 by 9 raised to cube. इसका cube root का मुझे आंसर बोलेगा कोई? Waiting for your answer. So whatever is this answer will actually tell you which of the option is correct. So you can directly tell me which option is correct here. Ball bearings में this is one of the most highly used formula. Then we have one more formula. That formula is, let's say L10 life के लिए पूछा. I hope you know what is L10 life. L10 life is that life up to which 90% of the bearings in the given sample can survive, okay, without failure. Okay, so let's another formula that is important is, let's see if you have to find out life at any other. It is raised to 1 by K. It's not raised to K. Yeah, is it raised to K? Let me check. Oh, sorry, it's raised to K. My mistake, it's raised to K. Yeah. So it's raised to K. What is the answer? Not 1 by 2. It's just 3. .9196, 0.91, 0.92. So it should be C.
Yeah, it is C, option C. 0.8 to 0.1, correct. Okay. How can you guys give different answers? So someone is getting less than 0.5 and so this that calls for checking. Okay. So let me check. This is in GATE 2008. Let me check the answers. Oh, 0.9 is for cube root. 0.9. Okay, okay. Okay, let's just let me check. Just a moment. So it is not cube root, okay, guys. It is not cube root. It is cube. If you are given 0.9 for cube root, then it is wrong. So let me just verify that. Yep, it is 0.47. It is 0.47. So it is less than 0.5. It is less than 0.5. It's less than 0.5. So it is A. So I guess you might have given me the answer for 1 by K. The formula I written it wrong. So it is K. So it is raised to K, not 1 by K. Yes, thank you. It is less than 0.5. Below 0.5. उसके बाद वाला क्वेश्चन करते हैं 31st. That's a good question to solve. So at a critical point in a component, the state of stress is given as sigma x is 100 MPa, sigma y by 220 MPa, and sigma x or sigma yz is given as 80 MPa, and all of the stress components are zero. Like they're talking about a 2D system. The yield strength of the material is 468 MPa. The factor of safety on the basis of maximum shear stress theory is. So first of all, using all this equation, we need to calculate what is tau max. Tau max, you guys can solve, okay? You guys can solve and answer in the comments once you get it. So it is given as sigma x minus sigma y by 2 plus tau xy square. So sigma x का वैल्यू दिया है उन्होंने 100 minus 220 MPa by 2 the whole square. Tau xy is 80. इधर से आपको tau max का वैल्यू आ जाएगा. So this is 100 minus 220, that is 120 by 2, that is 60, 60 square. 60 square is 6,600, and 80 square, that is 6,400. Square root of 10,000, that is 100. So tau max will be 100 MPa. Okay, and they are asking you what is the yield strength of the material, yield factor of safety on the basis of maximum shear stress theory. Maximum shear stress theory क्या बोलता है? Yeah, whatever is your tau, permissible value will be sigma y upon 2. Okay, so sigma y is given as 468 by 2. So this is 2, 3, 4 MPa. So permissible value is this. Okay, so what will be the factor of safety in this case? Correct, 2.34. Just have to divide this. So you have tau permissible upon tau max. So 234 upon 100. That is 2.34. That's right. 2.34. It's correct. Okay. So
2.34 is correct. Anyone with a different answer? Let's do the 27th, which I told we'll do it later. Let's do the 27th one. So in 27th question, they have said the homogeneous state of stress for a metal part undergoing the plastic deformation is given as this. So this actually is your nothing but your stress tensor. ये जो दिया है ना T, that is your stress tensor. So T will be equal to, this is your sigma, ideally 10, 5, 0, 5, 20, 0, 0, 0, minus 10. So sigma x, sigma y, sigma z, tau x, y, tau y x. Okay. And using von Mises criteria, the value of estimated shear stress for that. Okay. Now, ये अगर आपको solve करना है, what you require is one more equation which you need to know of equivalent stress. Now, this equivalent stress is actually given as 1/2 sigma x minus sigma y the whole square plus sigma y minus sigma z the whole square plus sigma z minus sigma x the whole square plus 6 times of tau xy square, tau yz square, tau zx square, and this entire thing is under root. Entire thing under root. So 1/2, this entire thing is under root. Okay, this entire equation is under root. Entire thing is under root. Root of 1/2 sigma x minus sigma y the whole square, sigma y minus sigma z the whole square, sigma z minus sigma x the whole square plus 6 times of tau xy plus tau yz square plus tau zx square. ये इक्वेशन यूज करके आपको इक्विवेलेंट नॉर्मल स्ट्रेस मिलेगा। मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर ये सब स्ट्रेसेस एक्ट होते हैं उसकी वजह से जो इफेक्ट आएगा ना वही सेम इफेक्ट ये एक फोर्स अप्लाई करने एक स्ट्रेस अप्लाई करने के बाद मिलेगा। इसका मतलब है दिस इज योर इक्विवेलेंट नॉर्मल स्ट्रेस। This is your equivalent normal stress. We just have to substitute this value. So we know this as sigma x, we know this as sigma y, we know this as sigma z. Tau x, y, tau x को substitute करो and you will get the value of sigma e. Tell me what is the value of sigma e. Okay, so what is the value of sigma e? I'm expecting this answer sigma e from you guys. First. Okay, it's 2.34 only. We might need to check what has gone wrong. So the answer for this equivalent stress will be 28.57 if I'm correct. If I calculated it correctly, it's 28.57 MPa. पर ये नहीं आपको पूछा, आप देखोगे ना तो 28.5 आपके ऑप्शंस में भी है। So directly जाके मार्क मत करो उसको,
उन्होंने पूछा है कि एस्टिमेटेड शियर यील्ड का वैल्यू क्या है। तो शियर यील्ड जो है, शियर यील्ड स्ट्रेस, दैट इज इक्विवेलेंट स्ट्रेस अपॉन √3। उन्होंने बोला है फॉर्म मिसेस यील्ड क्राइटेरिया, तो डिवाइड बाय √3 होता है। So you have to do this because we are using Horn misses field criteria. So this will be 28.57 upon √3, and the answer should turn out to be 16.07 MPa. 16.07 MPa. So in another concept that it reminds me while teaching this is brakes. So brakes में हम लोगों ने we only have friction brakes, we have drum brakes, we have band brake, simple band brake, we have differential band brake, and we have internal expanding brakes. So those questions are already done in your regular curriculum. The formulas are straightforward. So we are not going to recap it here. If you have anything that you want to ask, then you can just ping me here in the comment section. So please look at the comments also. So they have updated. We have a lecture of thermo applications tomorrow at 4 p.m. So there is one more question, question number 3, which was asked to solve of engineering mechanics. So let's take that question and then we'll end the day. It's been a long day. So question number 3 लेते हैं, जो पूछा था मुझे. So a rigid rod of length L is √2m. So let me draw this first. (45 degrees). ये आपका V2 है. And ये आपका V1. Okay. And the rod is of length √2. It's undergoing translational as well as rotational motion in XY plane as seen in the figure. The point. Okay, there is one more question. 10 करने बोल रहे हैं, तो भी देखते हैं कौन सा है. Let's see. So let's focus on this question. So V2 है, तो हमने बोला कि ये ट्रांसलेशन as well as rotational motion कर रहा है. Node AB, which is of length √2 meters. The point A has the velocity V1. Okay, the point A. This is your point A. This is your point B. This point A has a velocity V1, and V1 is given as 1 I cap plus 2 j cap meters per second. So इसका magnitude कितना रहेगा velocity का? Magnitude of this velocity will be magnitude of V1 will be root of 1 square plus 2 square, that is root of 5 meters per second. Okay, ये रहेगा. Then root, using this, what we are going to do is, उन्होंने ये भी दिया है उनका angles पूछा है. So yeah, so we are going to find out what is the angle that V1 subtends with the horizontal. That value is given as tan of 5 will be equal to the Vy component and the Vx component.
y component upon the x component. So this 2. I think tan of 5, 2. So 5 will be tan inverse of 2. क्या कर रहा हूँ मैं इधर? I'm going to draw a triangle here. Okay. So V2 ऐसे रहेगा. नीचे का book chop. This is going to be my V2. ये direction है velocity का. Okay. ये मेरा V1 है. इस तरह से आएगा. ये direction है velocity का. Already दिया होगा. उसके बीच का angle will be 5 will be tan inverse of 2. I guess this turns out to be around 63 degrees. Approximately 63 degrees आ जाता है ये. Okay. So 63. So the angle at 63. So ये जो angle subtend किया है इधर, ये जो angle subtend किया है, ये आपका 63 degrees है. 63 degrees point something आ जाएगा. So this will be 63 degrees point, let's say 5. So you need to find out this exact. I don't have the exact value because I don't have a calculator right now. So yeah, this will be the exact 63 point something. Will be greater than 45 obviously. Yeah, it should be around 65. Then now उन्होंने बोला है कि जो AB है ना दोनों चीज करता है, रोटेशन भी करता है एंड ट्रांसलेशन भी करता है. तो आप देखोगे इसको ना हम लोग इसके एग्जैक्टली सो VAB will be the velocity of this rod. We need to complete this triangle. This will be VAB. ये relative velocity of A with respect to B हो गया. Relative velocity of B with respect to A हो गया. इसका वैल्यू मुझे निकालना है. This thing. Okay, so V1 with respect to V2 is given, and this angle they have already given us 45 degrees. Okay, ये कैसे आया? ICR से आया. आपका ICR इस तरह से रहेगा. इसको आप कैलकुलेट करोगे. This will be here, and this will be here. Sorry, let me draw this again. Degrees A, B, and this is my V1. Okay, ICR से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं. इसको ऐसा ड्रॉप करके इसको इधर से ऐसे ड्रॉप करके तो ये लेंथ हो जाएगा. फिर इधर आपको रेडियसेस निकालने पड़ेंगे और ओमेगा भी निकालना पड़ेगा. Hence we have to use the triangle law. Okay. So ये वाली चीज. So VAB हम लोग को निकालना है. So once you know 63.5, 45, I think this angle can be calculated. So this will be 100. This will be around 70 something. Okay, ये angle आपको 70 something आ जाएगा. So let me just this will be 73 something. Yeah, be 73 point something. Now, if you know all the three angles, your job becomes simple. Because ये triangle है, आप sin को use कर सकते हो. Alright. So V1 upon sin of 45 degrees. V1 upon sin of 45. V1 का वैल्यू मुझे पता है √5 है. Upon sin of 45 is 1 by √2. This will be equal to. We need to find out this VAB upon sin of 63.5 degrees. तो V1 upon sin 45, VAB upon sin 63.5, इसको सिर्फ सब्स्टिट्यूट करके आपको सॉल्व करना है तो VAB का वैल्यू आपको मिल जाएगा. Okay, and they're asking you V2. I'm sorry, they're asking you V2. So we don't need to find out this value. Okay, they're asking you V2. So we won't put VAB, we will put V2.
So this will be V2, इसके opposite वाला sin 73 point something आएगा. So again I'll repeat. V1 का मैग्नीट्यूड निकाला, हम लोगों ने phi का वैल्यू निकाले, ओके, tan phi का वैल्यू निकाला, V2 का ये वेक्टर है वेलोसिटी का, V1 का वेक्टर ये दिया है, तो हम लोगों ने रिलेटिव वेलोसिटी निकाला VAB ये वाला, एंड ये वाला आपको ज्योमेट्री से एंगल मिलेगा 45 डिग्रीज. Okay, now since this is a triangle, okay, we can use a triangle sine rule. V1 upon sin 45, so V1 इसके opposite वाला एंगल, हम लोग को V2 चाहिए, so V2 upon इसके opposite वाला एंगल. V1 पता है, sin 45 पता है, sin 73 पता है, इधर से आपको V2 भी निकालना है. Yes, that will be done. The angle is 71.5. Thank you. So the angle here is 71.5. Thank you. Okay. Yeah, I center principle in ICR वजह से भी कर सकते हैं. Yes, you can solve that. And 10th question पूछा था. 10th question का answer C है, which is given correctly by Ramesh. See, in this case, I would recommend for you guys to actually draw SFD. The moment you draw SFD, okay, तो आप SFD देख के नीचे वाले जो ऑप्शंस है ना बेंडिंग मोमेंट को उसको एनालाइज करना है. ये सब में बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो हम लोग SFD बनाएंगे इसका. So my recommendation would be to draw the SFD first and then check whether that SFD matches with the diagrams in the BLB. Okay, there is some problem in 31. Tau max के लिए 100, 300, 150 वैल्यू है, तो साइन भी कंसीडर करना होगा. Science. Let me check. Yeah, hold it up. It's 31. So last problem we're talking about. Let me check the last problem. Okay, so there is some confusion here, so let me solve it once again. Machine design 2019. So we are asking to check critical point. How you guys have written this? So there is some confusion about some number 31. Yeah. So you're saying answer is 1.8. Oh, okay. It should be. Yes. What they have given sigma x and sigma y. Okay, talking about maximum shear strain. I think you guys can be right. And maybe थोड़ा सा ढाई हो गया वो something like that. This is what nuclear type does. So yeah. आपको tau max का value आया. If I'm correct, it came out to be 100 minus 220, 120, 220, 120 by 2, that is 60 square. So आपको tau max 100 आया by using maximum principles. Okay, 100 MPa आया. In case of maximum shear stress theory, this can be tau max. Tau max can be actually sigma 1 minus sigma 2. Okay, that needs to be taken into consideration.
that will be taken into consideration. Yes, so we'll solve it in a different way. We'll first find out sigma 1 principal stresses. So sigma 1 निकालना पड़ेगा पहले इसके लिए. Sigma 1 comma sigma 2 दोनों निकालने पड़ेंगे. So we'll do it this way. Plus tau xy square. Okay. सिर्फ के वैल्यूज पता है, इधर से आपको सिग्मा 1 का वैल्यू मिलेगा एंड सिग्मा 2 का वैल्यू मिलेगा. राइट. सो हियर इधर से आपको टाउ मैक्स का वैल्यू मिलेगा सेम सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाय 2. बट यही नहीं एक लेना है, आपके बाकी के दो वैल्यूज भी लेना है. ओके, दैट वैल्यूज विल बी टाउ मैक्स सिग्मा 1 बाय 2 कंसीडर करना है, टाउ मैक्स सिग्मा 2 by 2 कंसीडर करना है. तो आपके पास तीन पॉसिबल वैल्यूज है, ये या टाउ मैक्स सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 by 2. तीन पॉसिबल वैल्यूज है. इन तीन में से किसका मैक्सिमम रहेगा ना, वो आपको लेना है. ओके, एंड आई गेस द मैक्सिमम वैल्यू कम्स आउट टू बी फॉर the value comes out to be around let's see. So ये इस तरह से सॉल्व करना, that's why it went wrong maybe. So I guess sigma 1 by 2 will be the maximum value here. ये वैल्यू टाउ मैक्स लेना है आपको, एंड आपको दिया है 468 upon 2. That will be your shear yield. ये वैल्यू आ जाएगा 200 and okay. I think इसका वैल्यू होगा tau max. It's not 130. It is or tau max is 130. The sigma 1 is 130. Can you tell me? Tau max is 130. Okay, tau max is 130. Okay, great. So tau max is 130 and so tau max is 130 and this value is given by sigma 1 by 2. Okay, so from here I get sigma 1 to be equal to 260 MPa. Okay, so this is sigma 1 will be 260 MPa. You can also write this factor of safety as sigma YT upon maximum value, and this turns out to be 468 upon 230. I guess now you're going to get 1 point something. Now you're going to get 1 point something. Yes, that is that part. Yes, the answer comes out to be 1.130 into 2 हो जाएगा. It will be 260 here, and this will be 1.8, which is correct. This will be 1.8. Yes. Yes. Okay, then I guess we have done with all the sums, and yeah. Okay, then all the best for your GATE exams, and we'll end here. Yes, it's 1.8. It's 1.8, correct. Okay, then guys, I guess we covered machine design as far as well as SOM as well as engineering mechanics. Okay, so I think we can end the lecture here today. Thank you. All the best.